you so far? Decent in profit. हाँ, Not that's good, much. that's good. I think ऐसे सीरीज में जिसमें वेरिएंस इतना ज्यादा होता है, if you're on profit, that's good. कुछ तो तू सही कर रहा होगा फिर. यस, थोड़ी बहुत गलतियां भी की है फाइनल 12 हाँ, में आके। थोड़े बहुत नहीं, आई एम श्योर बहुत गलतियां की है, क्योंकि प्रो लेवल पे सब लोग इतनी गलतियां करते हैं. वही, तो नहीं हमारे मतलब लेवल पे तो जो जो की है वही बहुत बड़ी की है। बड़ी की है, तो एटलीस्ट अभी एहसास हो गया, दैट्स गुड. अ, मतलब लेट स्टेजेस पे जाके क्वीन जैक ऑफ से फोर बेट ब्लफ किया भाई। हाँ, आई मीन देखो सब पर्सपेक्टिव के बारे में, लाइक इफ यू थॉट दैट इट वाज अ गुड मूव एंड यू डिड इट, या आई वुड नॉट से दैट, लाइक क्योंकि हर एक सिचुएशन डिफरेंट होता है, राइट? ट्रू ट्रू। सो ओवर देयर इफ यू फेल्ट लाइक क्वीन जैक ऑफ विद योर क्वींस एंड जैक्स ब्लॉकर्स माइट जस्ट बी गुड, माय या यू नो, क्योंकि मतलब व्हाट आई he's वाज not like he won't three bet you with like ace x suited and stuff, right? या So मतलब I don't think it like very easy to be result oriented, but हाँ ट्रू। कुछ पॉइंट्स हो सकते होंगे. हाँ। Let's keep भाई that in the मतलब आई pool. वाज जस्ट थिंकिंग कि ही हैज सच अ ह्यूज स्टैक, ही विल जस्ट कॉल मी अप विद एसेस और किंग्स, रेस्ट हैंड विल Correct, फोल्ड, correct, correct. बट ही हैड Yeah, yeah. किंग्स सो कांट डू मच। I mean, see, he had the kings, right? So like या now, what can you do? I mean, obviously, you should be folding there if या you are not. आई वाज इन अ गुड But पोजीशन आल्सो ना देयर, डिडंट नीड टू। yeah, so then obviously, then it comes a little like in these situations. I think when you have a lot of chips, you have a good position. Then या there's no need to like या make these देयर वाज plays. नो नीड Always एग्जैक्टली। the question comes, कि हाँ, like क्योंकि it's like even good players when they have a lot of chips, वो लोग को hands मिल सकते हैं, right? ट्रू Kings और aces मिल सकते हैं. ट्रू It's not like वो लोग three bet bluff ही करने वाले, ट्रू। you know. So you can see my table, right? या आई कैन। Yeah, so I mean, on my table, I mean, I registered about 10 minutes back, and या already a few fun hands have happened. So, Surma Bhopali, which is या Kunal करेक्ट Patni, one of the regs in the field, या। he picked up a lot of free chips from some player who, tried to triple barrel. So, ये he's प्रो picked लोग up a को bit of देख के, chips. ये प्रो लोग को देख के बहुत सब लोग करते हैं ना कि यार इसको तो ब्लफ करना है। नहीं, एक्चुअली वो प्रोलो की बात नहीं थी. दैट गाय जस्ट मतलब आई डोंट इवन नो इफ ही न्यू हु सुरमा गोपाली इज, अच्छा बिकॉज़ ही हिमसेल्फ आई फेल्ट लाइक कोई अननोन है. तो अच्छा। उसने बस ऐसे ट्रिपल बैरल एस नाइन ऑफशूट के साथ कर लिया, लाइक वो तो ऐसे मजे में ही मतलब वो ऐसे खेल रहा था. सो आई मीन, एंड दैट्स द बेस्ट थिंग, राइट? लाइक व्हेन द टूर्नामेंट विद लाइक 4 crores guaranteed, यप okay, there is so much value, right? There are so many legs, and तो मतलब you make it a day to and all, there's good value to make, and if you get a good deep run, then there's a huge payout यप potentially there. So that's why, like, I think in these tournaments, and especially IOPC overall only, if you see guarantees itne bade hain, there are so many people playing that on every table you will have some players. Like, see, like over here, I mean, my notes are not super regular. So यप if you can see my table, I have like green marked as regs, यप and red is not like recreational or anything, but it's just like either I'm unsure about their like being regs. They might be some of my reg notes, मतलब जो recreational के notes थे सालों पहले के लिए, now they become crushers. क्रशर्स So ट्रू। some of my notes can be little misleading, but overall, like I mark people red who I feel like are making mistakes, and जिनसे मैं मतलब थोड़े सही वैल्यू निकल कोई जाएगी। सिचुएशन में फ्री चिप ले सकूं. हाँ, एंड लेकिन यहाँ पे बाकी काफी लोग हैं, लाइक आई नो आई प्लेड अ लॉट ऑफ फन चैंपियन एंड चीफ इज बैक, सो आई नो दैट दे हैव बीन हियर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड दे आर प्रोबेबली वेरी गुड प्लेयर्स, फन चैंपियन इज भूषण because सोहान ना। yeah, so they are like guys who have been there like for a long time and definitely very good in the game, very reggy-ish. So uh, I will, like, if I someone I don't have like notes marked on, and it's a tournament now which is like when there's no ICM, maybe now we are playing day one. या When there's no ICM, there's, I think, like no need to go like two out of line. ट्रू। Uh, इन द so I स्टार्ट ऑफ think द that's the approach I'll इट्स be द taking. स्टार्टिंग फेज ना ऑफ द टूर्नामेंट। Correct. And यहाँ पे मतलब ideally anyone playing this tournament should have the volume to take a lot of rebuys. मतलब many people don't, a lot of people satty also. या लेकिन should have the this, so people will be playing for chips. यप। एक मिनट मैं थोड़ा शेयरिंग वाला काम कर लूँ एक बार। कर ले. सब तूने जगह अपने शेयर टूर्नामेंट कर के दूँ। रजिस्टर कर लिया? मैंने कर दिया रजिस्टर अभी। ओके, वो मैं तो शेयर बेस्ट करता ऑफ हूँ लक. वो भी आपको। मैं भी ट्यूसडे प्राइम के लिए अभी थोड़े टाइम में रजिस्टर करूंगा, अभी बहुत अर्ली है. आई थिंक आधा घंटा ही हुआ है. आई थिंक आफ्टर हाफ एन आवर के लिए that. मेरा टेबल
ओके ओके ओके। मुझे थोड़ा कैप्चर वापस करना पड़ेगा, बट आपको मेरा टेबल दिख रहा होगा ना? हाँ, आर यू सेंडिंग मी द लिंक डिस्कॉर्ड पे? नहीं, डिस्कॉर्ड पे आपको मैंने शेयर कर दिया है। ओके, हाँ ठीक है, मैं देख। पर अपना थोड़ा कैम ऑफ हो गया, वो मैं सही कर देता हूँ। ओके, इसमें आपको आपका कैम ऑफ हो गया क्या समय भाई? समय भाई, हेलो, बोलो। हाँ हाँ हाँ। ऐसे कैसे? उन्होंने भी डाल दिया क्या ऋषि? देखता हूँ। ठीक है। हेलो हेलो समय भाई, चलो भाई, क्या दिक्कत नहीं हो गई लगता है कुछ। अब आ गया। एक मिनट ना, हम्म, मैं हैंड में हूँ। मैं तो बेसिकली, मैं अगर तेरा टेबल मेरे कंप्यूटर के डिस्कॉर्ड से देखूँ ना, तो ये फोन का वो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है, वीडियो कॉल। अच्छा। हाँ हाँ, ओ एक ओ, सो एक मिनट में तो कोई मतलब नहीं है ना वैसे मैं शेयर करूँ तो? मैं कर नहीं, दूँ? मच है। चलो ठीक है, बेस्ट। सो ये हैंड में, आई मीन, आई एम गोइंग टू कॉल द फ्लॉप। 7 is good for me, 9 is good. Oh my god, I'm still beating ace jack, ace king. अपना लिंक, अपना वो स्ट्रीम आ गया ना उस पर? स्टार्टिंग पे आपने देखा? मैं ये बार चेक कर लेता और हूँ। मैं चेक नहीं किया है, मैं कर मैं लेता चेक करता हूँ। He should most likely be betting here to get me off all my 7 and 10. Yeah, it's good sizing. But I also think if I call pre-flop, I should call the flop. And I think he just give up a lot on the river. Yeah, that's a good card for my range. So he should. He might give up a lot of hands. Yeah, yeah, we're good. हूँ। कैम सेट कर लो आपका अपोजिट में। ऑल गुड। Yeah, yeah, all good, all good. I just watch your thing on YouTube, na? 3 And then मिनट we के can डिले पे discuss it. आएगा बस। हाँ, वो चलेगा। हाँ, आप बाद में डिस्कस कर सकते हो, बराबर है। हाँ, दो वैसे भी तीन बाद मिनट में बाद ही। डिस्कस करना है अपने को। ऑन स्ट्रीम हाँ, वो। करेंगे तो कोल्यूजन हो जाएगा। हाँ, दैट्स आल्सो गुड। correct. कोई दिक्कत नहीं। Yeah, yeah. Okay, so this guy, तो ये हो I'm just गया। going to three bet and ओके, call is तो all. चैट्स आ गई हैं भाई। गुड लक सेज ऋषिक, थैंक यू ऋषिक भाई। गो ब्रदर्स सेज डॉक्टर Three bet रवि there गोयल, थैंक and यू। then बोला ब्रदर्स ऑलविन, वेलकम वेलकम गाइस, यार सब लोग लाइक कर दो यार। अभिषेक भाई, चेतन भाई, एकजोत भाई, सचिन भाई, मोहित भाई। गुड लक समय भाई सेज मोहित नारायणी। let me join the. चैट, मतलब पर चैट आपको ना सब जगह से आएगा, मतलब मेरे चैनल से भी आएगा, और स्पार्टन के चैनल से भी आएगा, और हाँ, तो आपके चैनल से जो आएगा मुझे बता देना, मैं यूट्यूब पे देखता हूँ, ठीक है। ताकि मैं वहां से रिस्पॉन्ड कर सकता ठीक है। हूँ। Don't have to bet much. Because all our aces and kings and queens will be betting very less. I mean, and I don't think he'll convert. हम्म, I mean, I think we still have to like bet for it.
But he has so many eights in that. Yeah, that's good. I mean, actually, eights and nines are rip free actually for myself. Sorry. चल रहा है अपना स्पार्टन के ऑफिशियल पे भी चल रहा है. आप मेरे चैनल पे ही देख लो वैसे तो चैट्स वैसे. तेरा चैनल का लिंक वो तूने व्हाट्सएप पे भेजा है ना? हाँ मैं उससे खोल लेता हूँ. मेरा व्हाट्सएप वेब यहाँ पे खुला है. तूने मेरे को लिंक एक बार लिंक भेज सकता है व्हाट्सएप पे अगर पॉसिबल है? मैं वापस भेजता हूँ, कोई दिक्कत नहीं. हाँ. Oops, oops, oops. कोई ज़रूरत नहीं है इसे कर लेने की. चलेगा. लेट्स गो भाई लोग. फोड़ दो. आ जा रहे राहुल भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम. Guys, sometimes if I lose my camera, I'm extremely sorry. वैसे ही सेम सेटअप कर देना बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं. तू फोन पे कैमरा यूज कर रहा है? मैं तो लैपटॉप पे हूँ. हाँ, वही मेरा वो वेबकैम का हुआ है. कोई दिक्कत नहीं. वो तो टेक्निकल इश्यूज तो क्या कर सकते हैं. किसको नया चैट को मैं. चलो ये हो गया. अब मैं थोड़ा शेयरिंग कर लेता हूँ. बढ़िया. ओके. ये हो गया. यूट्यूब लिंक शेयर कर देते हैं फटाफट सब जगह पे. फिर गेम पे भी तो फोकस करना है. हाँ, ऐसा ना हो जाए कि तू हाँ. शेयरिंग पे इतना फोकस कुछ कर भी रहा है और करने जा रहा हूँ. गेम में चिप्स ही नहीं है. गेम में फिर सब देते जा रहे हैं. फिर सीधा बाय बोल रहा हूँ. मैं देख रहा हूँ अभी तेरा हैंड देख रहा हूँ मैं सेवेंस का. हम्म, आज करेंगे. I like it on our stream, like both the colors of our like tables are so different because you're playing the colored या cards and I'm playing या like the old school cards. ओल्ड स्कूल या. अभी मैं थोड़ा वो भी नहीं हो रहा हूँ ना कि मतलब ज़्यादा वो नहीं हूँ. फोकस नहीं है ना. नहीं, but I think it's okay because अभी तो तेरा टूर्नामेंट बहुत ही अर्ली स्टेजेस में है and बहुत ज्यादा डीप है. So या like क्यों रिस्क करना. हाँ like वही बात है. और कहाँ भेजना था मुझे. so guys, I'm on the YouTube link of our stream. So if you all have any ओके. questions for like any hand-related things, just please put it on the YouTube chat. Or if you want to ask me something, you all can also post it on Harsh's chat, and Harsh will like ask me the same thing. या जस्ट गो टू द स्पार्टन पोकर्स ऑफिशियल चैनल एंड जस्ट पोस्ट योर क्वेश्चंस गाइस. और समय भाई आप थोड़ा करो स्ट्रीम को एंटरटेन जब तक मैं शेयर करता हूँ, वरना ऐसे शान शायद हाँ, मत. नहीं नहीं, definitely, definitely. ठीक है. Yeah, I mean, a lot of people are wishing us best of luck, and यही तो मज़ा है भाई स्ट्रीम thank करना. you everyone for that because I think हम लोग अभी जो IOPC के टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं guaranteed इतने बड़े हैं like even if you just keep the buy-ins aside for 1 second, up top इतने heavy है कि anyone can make a lot of money.
Again, now okay, this guy chipped up Eureka. Let's see how. Okay, did he rebuy? Okay. So he got in 10 bigs, obviously sevens to ace 10, and he lost, and then he rebought. Okay. Okay. Diet chip calls from the dealer button. Obviously, we have a great hand to go post flop. So we're just going to call this. Realize equity. That's definitely a good flop for us. We have open and straight draw. We hit the nuts with Jack and six. Spade is also good because we block a lot of like 9x of spades that this guy can have, like 9 10 suited, 9 10 spades, 9 jack spades that he might have flatted with. And we also pick up like backdoor flush draw with against some hands. Okay, so that's a great card. The problem is that if these both check the flop, they should not have many queen x. They should have a lot of jack x, and a lot of jack x is also checking back the flop. So we should, I think, go for like a big street of value because now Jack won't fold. We like can bet one big street, make it look like a draw heavy hand. And obviously, Eureka can have jacks when tens are not folding now. He should have ace jack that calls. He can have ace and instant spades is one combo. But yeah, I like betting here because also like there are a lot of bad cards in the river uh, that don't like pay us off. And the thing is, if a ace or king opens and I go for like a check, I should ideally be checking an ace or king on the river, right? And if I check raise there, it's just so strong. I have zero bluffs on those cards. So I like going like betting big on the turn for value against like Jack King, Ace Jack, and um, and then let's see depending on the river. Like if it's a king or an ace, we can like go really big, hoping they hit two pair, and they might even spaz and like maybe jam on us. Uh, Someone saying, Samay bhai, can you take us through your poker journey? So my poker journey, I've been playing for a very long time. I started off initially like a lot of people, वो Zynga poker पे grind 12 13 साल पहले. And Zynga poker में तो मतलब जब मैंने शुरुआत ही किए थे पोकर खेलने के लिए and inside वो time पे ना I had made so many of those virtual chips. I had actually sold some of those virtual chips for real money like back in the day 13 14 years back. So that is like the initial days of where I started learning and playing poker. And then मैंने बॉम्बे में बहुत सारे कैश गेम्स खेलना शुरू किया था लाइव कैश गेम्स स्मॉल स्मॉल स्टेक्स 2K बाइन 5K बाइन वहाँ पे मतलब तगड़ा बैंकरोल बनाना शुरू किया था 16 years old 17 years old राउंडर्स फिल्म देखी the full inspiration as a 16 17 year old boys college types एंड फिर वो टाइम पे मैंने एक्चुअली बहुत कुछ जो अच्छा किया पोकर के लिए आई स्टार्ट प्लेइंग ऑन द ऑनलाइन पोकर स्टार्स ग्लोबल तो वहाँ पे क्या हुआ ना वहाँ पे टूर्नामेंट बहुत बड़े बड़े होते थे एंड द एक्सपोजर वाज वेरी गुड सो देयर वर दीस वेबसाइट्स फुलटेड पोकर पोकर स्टार्स डैफा पोकर तो उनमें मैंने रोज खेलना शुरू किया एंड आई स्टार्टेड सीइंग हाउ दीस द प्रोफेशनल्स ऑफ दैट टाइम वर प्लेइंग and वहाँ से कुछ ना कुछ I started picking up things and I started I got very intrigued with the game started focusing from that cash game setup to tournaments so that's where I started playing and then throughout college I started playing tournaments cash games steadily building a bankroll obviously मैं पढ़ाई भी कर रहा था studying was very important and that was my initial journey. And then post college, I did play quite a bit. I had a lot of big payouts on Spartan Poker, Adapsi 2, and I went to WSOP in 2018. I had a good series. Nothing really big, no deep runs, but I was up for the trip, which is good. And post that, I got really busy in the last few years where I was assisting on a film called Brahmastra. I'm going to give a shout out to that film. It's releasing on 9th September this year. It's a big film with Ranbir Kapoor, Alia Bhatt. तो मैंने उस पर बहुत काम किया रगड़ा and whenever I got the time I was still playing poker tournaments because I had studied the game so much played it so much I didn't feel like I wanted to stop playing so I've been playing tournament poker for a very long time and I think COVID hua tab the industry got affected a lot so I got again a lot of time so I started playing a little bit more of poker so these are the two things I'm primarily focusing on now. I've been doing a lot of theatre acting, a lot of plays in Mumbai. So I'm doing a lot of theatre now, and I'm also playing a lot of poker in my free time. The days I'm done with the rehearsals early.
चलो बढ़िया है So भाई I आज। hope that answers. I hope that answers my poker journey question, which someone has maybe very casually asked, but मैंने वो detail में बता दिया है, अरे आज so तो that भाई बोलना ही तो है, ऑलविन भाई ने पूछा हाँ, so था। that everyone knows के हम्म। आए स्ट्रीम पे, बट बहुत पोकर भी खेला है यार, बहुत ग्राइंड किया है, बहुत Yep. वो जमाना होता था वे the early days of poker, full tilt and उस पे ना मतलब आई टू गो मैड यार, वो उसमें ना ऑल दीज माइक्रो स्टेक्स कैश गेम ना, उस पे वो 15 16 18 टेबल लगाने का मजा ही कुछ और होता था, एक एक दो डॉलर बाय 100 Yep. बिग ब्लाइंड के साथ 18 टेबल पे, यू फील लाइक वन ऑफ द चाइनीज मशीन्स, Yep. like you're just like in the zone, like playing 18 16 Clicking tables, buttons. and I think that was a different experience. That was like a proper grinder experience for me. And so I think that start is it's good, yeah. वो वॉल्यूम डालने में ना काफी हेल्प हो जाता है, but I think like you definitely like need to know, like after putting in volume, if you're making mistakes, you know where to improve. Like now that I feel like abhi, if I talk about 2022, Harsh, I think the Indian field has become so good, Yeah. and the average level of gameplay ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. Like True. compared to my just experience from so many years back, Mhm. um, it's like Field has completely changed. poker in our country has evolved a lot. Yep. So it's become harder, and it's evolved. People have become much better. People are exposed to so much more. Yeah, to Yep. Instagram page, there are so many good poker players who you can follow, who are putting amazing content, Yep. and this Twitch is there. Okay, so I have an interesting hand. This guy just ripped 33 bigs, and I think his range is very ace-king heavy here. And I mean, there's just no need to call. So we're just gonna like fold, tank a bit and fold. मैं बोल रहा हूँ आज मेरा काम Yeesh. बढ़िया है। आज मेरे को ज्यादा बोलना नहीं है, समय भाई फुल नहीं नहीं कमांड यार, करके ऑफ रखे। कोर्स मैं तेरा स्ट्रीम सुन, तेरा टेबल चालू है, मैं तेरे को पूछने वाला हूँ तू क्यों क्या कर रहा था। आई नो आई प्लेड विद यू एंड आई नो कि तू काफी अग्रेसिव है, सो आई मीन आई एम नॉट सेइंग यू शुड टेक द अग्रेसिव लाइन, एंड आई यप डोंट यप। वांट यू वो मैंने टू सेवेंथ फ्लॉप पे चेक गो कर दिया सुपर ना। ऑल but okay, so Donkey is a very good player, raises early position, 10 to suited, I'm going to call this um, ट्रिब्यूट टू डॉयल ब्रंसन। no, not tribute to Doyle Brunson. It's just that I would want to have some like so deep. I would like to have some suited, hands in my combination. ट्रू। You can hit like a lot of hands that will stack back and stacked off. Obviously a good flop for me, losing only two overpairs and some better 10x's. When we call here, he should be a little cautious. The nine is, and he does have a lot of jack queens, but whatever. We are going to be calling one more street for sure, even if it's a big bet, because he can still have ace jack that he does this with. He can have hearts. Yeah, he checks back, which is kind of good. The problem is, yeah, he checks back a lot of his ace jack, yeah, king, because he picks up so much equity. Um, let's see. Uh, yeah, I think that's good. Yeah, he decides to give up his ace king suited. Fair enough. He has absolutely no equity, and when I call on the flop, I have all straight draws. I have all the three of a kind. I have all the 10x's. And nine is again, it's like a good card for me, and sometimes a good card for him. He does have Jack Queen, and but obviously Ace King suited is like spades here is not a hand I think he can convert to a bluff. Especially when my hand is so range heavy, it has an यप। advantage there. रेंज मैं रेंज बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म यूज कर रहा हूँ, थोड़ा आराम नहीं, से रेंज एडवांटेज ले नहीं लूँ। बिग ब्लाइंड के बराबर। हाँ, तो वहाँ पे एडवांटेज है तो। But गुड yeah, लक I mean, over गाइस। that Tendo suited, like I would say like these Tendo suited hands and all like Tendo's off to obviously I'm not defending. यप। Tendo suited is like it is a hand that is like it's fine to fold also. Like मैं मतलब ऐसा कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि ठीक है यार, like उतना equity नहीं realize करता है. You ट्रू। realize equity when you pick up a flush draw, or you can get badly stuck also, sometimes with ट्रू। the that 10-8 board is also like kind of a hand that can अरे uh, I'm वाह stopping वाह वाह myself. वाह वाह। I've picked up the aces, which is snap folded to my this button. Um, Still going to open 2.2x only. You want to have डोंट some वांट टू three प्ले bets. मच। Donkey, I think, will defend a lot of his range here. A lot.
If he three bets, I think I want a flat because he's got the perfect space flatted. Queen 9 6 two hearts. I like to go on the bigger sizing here just because it's very. I think aces is probably a hand. I'm not sure. Here's what I'm also not sure about. Like whether I should go small. I know a lot of like regs would go small here, but I'm gonna personally like go big because I think because this kind of player I think will call with his 9x and queen x even 6x on the flop. So I think he's calling even that sizing. And if he check raises me, I think we just get it in because he can have a lot of like combo checks. Calls. Jack of spades. Puts in a lot of two pairs. Hmm. You don't block king x, 10x. 8-10 gets there. 10 jack is the only hand that calls with value. Queen 8, queen 10. I think we're going to just check this back. Hmm. Hope for a low card or something. Yeah, that's a good card. If he checks again here. So now a lot of my ace 10, ace kings check back. Mhm. Yeah, my ace king definitely check back. Um, yeah, so now the real question. I mean, we should be calling because he should even be doing this with like queen king. He does have a lot of two pairs here. The question is, this particular player might call a rip with a verse, but I just don't think like he thinks I'm capable of doing it. So I'm just gonna flat here. Right. Uh, Fine. yeah, he has a queen. So yeah, we definitely do lose out on value. This वहां is पे like the अगर आप thing I जैम was करते तो trying वो to कॉल कर say. देता ना. और हाँ मतलब ये पर्टिकुलर हैंड के साथ मोस्टली लाइक शायद कॉल कर देता बट बिकॉज बट मेरे जैक्स ओवरऑल. टर्न पे चेक नहीं कर रहे राइट एंड you know like you guys watching the stream can be like समय इतना टाइट खेल रहा है इतना कंजर्वेटिव खेल रहा है but I'm also like that is why mid hand only I was trying to say कि um, you know you feel like, okay, turn pay he's giving even hearts a draw. He can have queen x heart that I can put pressure on. But the thing is, if we like, maybe it's better to bet big on the turn and call a jam. पता नहीं. ठीक है. पोकर किसको ठीक पता है. है पूरा. हाँ नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ कि स्पॉट्स डिफिकल्ट होते हैं यार. हाँ. मतलब तभी तो मजा आता है ना. even these एग्जैक्टली. professional solutions will give you like so many different ways of playing them, right? Yep. Uh, but ये प्री फ्लॉप फोल्ड कर सकता था क्या यार. क्या कौन सा हैंड था? अभी आएगा आपको 3 मिनट बाद आएगा. 3 मिनट. हाँ अभी मेरा एसी वाला आ रहा है तो मैं वो देख रहा हूँ. एसीस वाले के यहाँ साथ पे क्या आया मैं होगा. मैं कुछ किसी और चीज के बारे में बात कर रहा था और जैसे डीलर बटन पे दो काले एसेस आ गए. मैं जो आंख एक सेकंड के लिए झलक देखी ना एसेस की मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया. जो मैं बोल रहा था मैंने वो बोलना 2 मिनट के लिए बंद कर दिया. ओके एसेस खेल रहे स्ट्रीम पे देखते हैं कैसे खेलेंगे. कोई दिक्कत नहीं. अरे यार. अरे यार क्या हुआ दिखा. नहीं अभी ठीक है. हैंड नहीं आया. फोल्ड तो अच्छा था वैसे. बट ठीक हाँ है. फोल्ड तो अच्छा था. तूने डिसाइड कर लिया फोल्ड अच्छा था क्योंकि मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड रिजल्ट कोई और ओरिएंटेड हैंड होके. जीत गया. हाँ हाँ. तो रिजल्ट ओरिएंटेड होके हाँ. बोल दिया फोल्ड अच्छा था. मतलब जैसे जैसे अगर अगर मेरे इससे वहां पे फट जाते तो आपका ये कॉल गलत हो जाता. hack हो जाते. मतलब एवरीवन मतलब मैं बोला वाओ व्हाट अ पॉट कंट्रोल हैंड यार. मतलब कैसे डीलर बटन पे मैंने एसेस कंट्रोल करके अगेंस्ट टू पेयर. ठीक है. मैंने एसिस से मतलब एकदम फुल पूरे पूरा वैल्यू नहीं दे दिया मतलब ऐसे. फुल ऐसा. अब ठीक है पर. भाई अभी मेरे को वही शायद हो प्री जाता है ना फ्लॉप जब मेरे को शायद प्री फ्लॉप ही कॉल नहीं ना करना चाहिए था. वो दिक्कत है. एसेस किसको मेरे को. तुझे. हाँ एट्स वाला तूने हैंड आएगा किंग आपको. थ्री. हाँ मैं देख रहा हूँ किंग थ्री सूटेड ओपन किया है नहीं वो फिर अच्छा कट था. ऑफ पे. वो अच्छा था. वो अच्छा था. तूने मतलब वो भी डिसाइड कर लिया कि अच्छा था. जीत गया ना. राइट है रॉन्ग है वो सब लोग बात ही नहीं कर रहे. अच्छा था वो डिसाइड हो गया है. वो जीत गया ना मैं. मेरे टेबल पे यहाँ पे सेट हो गया है. स्टैंडर्ड हैंड दूसरे से सेवन दिस गाइस. एट्स आई वाला डिडंट सी बताना. एग्जैक्टली एट्स क्या वाला एक्शन. यार. एट्स वाला क्या करना हाँ मैं चाहिए देख था. रहा हूँ किंग थ्री सूटेड पे अभी आपने चेक बैक कर दिया. ओके एस एट क्लब्स आई एम ओपनिंग दिस हैंड. ठीक है. टर्न पे भी जब तो आप हैंड तो जीत गए. हाँ तो हो गया. जीत गया. अच्छा हो गया. अब एट्स वाला जीत देखो. गए एट्स वाला. अच्छा हो गया. एट्स वाला हैंड देखो यार. उसमें प्री फ्लॉप कॉल ओ करना शिट चाहिए था. मैन मैंने अभी मेरा एसेस वाला हैंड देखा. 15 बिग्स. आई थिंक यहाँ पे उसके रेंज में इन पर्टिकुलर after like this guy flats who can actually have a lot of like sixes sevens and all. I don't think he
I'm going to fold this with a player behind. There's just no need to get in 15 bigs. Yeah. Chief is back has like a lot of falling hands. Yeah. So um, flop would have been a little crazy for us. You would have lost a little bit of chips here. But yeah, I mean, again, he is very capable of having 10 jack, jack queen suited, yeah, queen jack off with that stack size. Oh, Kunal Patni opens 2.5 big UTG. I'm just going to fold this. 8 oceans up. I'm seeing. Yeah, 8 hands is over. Can I talk about it? Is it हाँ still going on? हो गया नहीं वो आप जो भी हैंड्स देख रहे Okay. हो वो हो गया Okay, okay. Shit, because the big pot I'm seeing 8s and 3-way, queen 6-9, 2 hearts. Let's see. Basically, you आपने 3 bet call किया ना pre हाँ flop. हाँ 36 big blind bet किए. Wow. Basically, effectively all in. इफेक्टिवली ऑल Let's see what Harsh does. He tanks and folds. That's my guess. He's scratching his head. I can see his screen पे head scratch कर रहा है. अरे क्या कर रहा है यार ये मेरे को पता था उससे मैं शायद अहेड हो सकता हूँ बट ये और एक जन था तो मैंने फोल्ड कर दिया हाँ, उसने जैक्स कॉल कर दिया. I क्योंकि mean, उसने nice. उसने स्क्वीज किया था ना इतना बड़ा स्टार्टिंग जैक्स से एस क्वीन के साथ. हाँ एस क्वीन के साथ स्क्वीज किया था. एस जैक तो ये जैक के साथ स्क्वीज किया था. एस जैक ऑफ तो मैंने कॉल किया था मैं बोला कि देखते हैं 8 लगाएंगे पर नहीं लगा तो मैंने fold हाँ कर नहीं. दिया। ठीक था ना मतलब कुछ इतना वो नहीं था ना अभी ठीक है ना. if you're so deep and like हाँ implied odds 8 को hit करने के लिए है. Interesting hand if I mean if low like what a jams you're calling. हम्म, 25 bigs. I think we're still calling this. I don't know. He still has a lot of like. What's he doing with the eights? Is he really flatting it? Um, okay, now I'm gonna अब fold फोल्ड हो because सकता tight. Yeah, है यार should एक तो ये इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट the में worst hand I think he should have is Jack and then Jacks. Kings, So we were gonna take the flip against Eureka, but once died chips repops. और अगर वो फ्लैट करता तो तो किंग्स आई के थिंक साथ देन तो मैं 100% ही फोल्ड कर देता बिकॉज अगर 26 बिग वहां पे फ्लैट कर देता विच इज ऑलमोस्ट लाइक 40% ऑफ माय स्टैक. हम्म, मेरे को तो बहुत ही स्ट्रांग लग रहा था बिकॉज उसके 10 एंड जैक्स को तो रिप ही करना चाहिए. बराबर तो फ्लैट कर रहा है तो मेरे को शायद मैं उसको एसिस पे ही डाल दूं. किंग से भी नहीं डाल दूं. यू नो. बराबर है एसिस पे डाल के एस पे फोल्ड कर दूं. अपने हिमांशु भाई बोल रहे कॉन्ग्रेचुलेशंस टू डोंकी 07 फॉर रनर अप फिनिश एट मेन इवेंट ऑफ या 18 या holes डेफिनेटली मैन. Ashish see my notes on him which I randomly good reg crazy also. And that crazy also guys is like in a good way because it's like he's capable of doing a lot of पुटिंग यू इन good स्पॉट plays which are good spots. uh, and that's why I think a lot of my like a lot of the players who are really good in our country and I think in the entire world are capable of making like my table got shifted. Let's see the new table. I like it when I shift to a new table and I don't have the entire table marked green because कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि भाई rather than you have just all green tags and very honestly that's tough to play. Like sometimes ट्रू if some of them are in that spewy mood, you get a lot of chips. ऐसा नहीं है कि like you know we can't play against them, यप but it also becomes sometimes very difficult to get chips. You know. So I definitely like it when there are players who I don't know, like you know, हाँ आजकल तो लोग अपना लाइक नेम चेंज कर देते हैं, लाइक इफ लेकिन आई यहाँ पे कम टू योर लेडी टेबल नॉट. हाँ. लाइक इफ आई कम टू योर टेबल यू लाइक नहीं मी अ नहीं लॉट नहीं नहीं भाई ऐसी बात नहीं है. ऐसी बात नहीं है. I have asked you, I know who you are, I know your Spartan ID, and but like there are players like you know like not saying anything about any particular player, but for example like Lady North Tower, I don't have this person marked and ऐसे मेरे दिमाग में मेरे को आ भी नहीं रहा है कि I have played with them, you know. So and now he instantly opened 2x, like you know I'm not sure, I don't know enough about this player. But K4 I know of course played a lot with Sanish 21. These guys सनीश are तो players एक of playing a lot. यप Yeah, yeah. I have marked यप him on my like light green label. Played a lot of poker. गाइस जो भी लक Won a भेज रहे lot हैं of थैंक यू tournaments. सो मच गाइस आज मैं सारी चैट नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि आज थोड़ा ड्यूअल स्ट्रीम चल रहा है अपना और काफ़ी बढ़िया वॉचिंग आ रही है गाइस तो जितना भी हो सके ये स्ट्रीम से आप जितना भी ले सको
उसको आप ग्रैस्प करो। और अपन नॉर्मली डेली तो स्ट्रीम करते ही हैं, उस पर अपन मस्त बात बात करेंगे ही। आज थोड़ा अपन वैल्यू एडिशन वाला स्ट्रीम कर रहे हैं, मज़े वज़े तो करते करेंगे, इसमें भी करेंगे, ऐसा नहीं है। बट थैंक यू फॉर द गुड विशेस गाइस, एंड यप, दैट इज इट। और ये ऑलविन पूछ रहा है समय भाई एसिस वाले हैंड के लिए, हाँ। बट डू यू थिंक ही वुड कॉल योर जैम? ही वॉज रिपिंग लॉट ऑफ टू पेयर्स, और इफ ही वुड हैव जैम्ड वुड यू हैव कॉल्ड? So वही मैं सोच रहा था. The thing is that in that I'm assuming you're talking about the river because हम लोग jam की बात कर रहे हैं. हाँ हाँ। तो मैं वही सोच रहा था that when he bet so heavy on the river, he does have a lot of queen x, like a single queen pair which he will bet, which I'm beating with my aces, and he does also have a lot of two pairs, and he has some hands that he makes into a bluff. Okay, like some hearts maybe that he just feels like, some hearts without an ace where he's like totally unblocking my ace x, ace king, and all, and he wants to make those into a bluff. So he has a very few bluffs there. जब वो वहाँ पे river पे वो sizing कर रहा है, I'm thinking he's going for value with queen x and two pairs. And again, the thing is, against that particular player, I think he is very good to even fold the queen five over there on the river to my jam, and he's capable of calling also. Like, thinking I might have a bluff and calling. So I am again like, I think अगर वो check करते हैं and मैं bet करता and he would, it would be a very sick spot for me, you know. And again, I would have had to think about it, but I'm also not sure. Like, it would have been a tough decision. यार मैं श्योर नहीं हूँ. मैं ऑनेस्टली जवाब दूँ ना, तो मैं ऑब्वियसली रेस तो करता रिवर पे अगर वो चेक करते हैं. शायद कॉल ऑफ कर देता. शायद मेरे पास चिप्स भी बहुत है, तो एट दैट स्पॉट मैं कर सोचता दैट देते। हाँ मैं कॉल कर एंड देता, अर्ली बट इन अगेन अर्ली यार. इन द टूर्नामेंट ऑल्सो ना। हाँ, but see, he has to be sick enough to make a check raise bluff there on the river, which is not वेरी that स्ट्रॉन्ग। easy, very strong. And the thing is, with his hand, he might not do it. Like, if he checked for some reason and I bet big on the river, firstly, that particular hand should go for value on the river, which he did. Uh, I'm not sure, yeah, if he would have called with that, with queen five. Shayad he would have gotten away, Maybe some of my queen ten check back turn, some of my even some of my ace queen might check back turn, चेक yeah, बैक because टर्न। यप। अभी इतने straight my ace queen barely improved ना. और काफी वहाँ स्ट्रेट पे से बोर्ड हम था। aces था तो हम लोग easy है कि मतलब queen हो सके, but हम लोग के hand उतना aces उतना improve नहीं हो रहे, इसलिए मैंने turn check back किया थोड़ा वो pot control के हिसाब से. फिर और भाई कोई उल्टा सीधा हैंड दिखा क्या मेरा? नहीं, मैंने नहीं देखा. प्लीज, अभी वो आने वाला है क्या? मेरे को देखना नहीं, है. नहीं आ रहा मैं है अभी यहाँ तक पे तो कोई। बहुत 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 डिटेल में हर एक हैंड डिस्कस कर रहा हूँ, एंड आई डोंट वांट टू टेक अ नेम, बट अ वेरी प्रोफेशनल इंडियन पोकर प्लेयर, one of the best in our country, has actually WhatsApped me and said that Samay, you don't need to discuss every hand. So क्या? समय यू डोंट? he said Samay, you don't need to discuss every hand. So yeah, I don't want the stream to get too technical. Like, guys, this is समय यू not डोंट some नीड टू डिस्कस coaching एवरीथिंग। stream, and I can very casually tell you all that मेरे से ना बहुत सारे better players हमारे country में है who are theoretically way more sound. Okay, so I might sound a little technical, and भाई all might think कि भाई जो समय बोल रहा है, wow, it is on the lines of a lot of theory, but it can definitely be wrong. Huh? So please don't take anything I say like to the point where हाँ, it पत्थर की is लकीर मत correct. बना लेना। We हाँ पत्थर की वो सही हर्ष ने exactly सही पकड़ा. Basically, we are also still trying to learn. We are all in it for the same thing. We all want to run deep. We all want to win tournaments, and we all want to make money. यार हक से बोलेंगे यार, किस ट्रू। किस कौन पोकर खेलता है. And of course, there is a certain thrill of winning a tournament. That thoda glory, sometimes is the trophy. You know, I think that should be there because वो pride concept तो होना चाहिए यार. It's at the end of the day, guys, I very strongly support poker to be a very skill-oriented game, very highly skilled game, very highly sport-oriented game. So, that's something I just want to say. Even how many of people are watching today, poker, man, like, it's the thing that, guys, we as players, whether we are not professional, semi-professional, or professional, we are all for the same cause, right? That poker is a skill-oriented game, and this is something I really want to talk about. Poker is a skill-oriented game, and we should like heavily promote that. Amongst our friends, amongst people, who maybe think, oh shit, लड़का तो
poker खेलता है, gambling है ये वो. I think that that norm hopefully in our country goes away, whether it takes 5 years, 10 years, 50 years. You know, I'm really all in for that cause that poker एक दिन मतलब हमारे देश में wow, the poker player people look up to that, and there are people who look up to it, but more people look up to it. क्रिकेट का भी तो We पहले ऐसे ही था want ना to. समय भाई, हाँ, जब किसमें? क्रिकेट में क्रिकेट में भी, हाँ वही. पहले जब 1983 वर्ल्ड कप का अपना 83 मूवी भी आई, उसमें सब बताया ना करेक्ट, क्रिकेटर्स करेक्ट. का क्या हाल था। तब क्रिकेटर को ऐसे देखते थे, ये तो क्रिकेट खेलता है, क्या करेगा। और आज वो क्रिकेटर। मैं बहुत इंटरेस्टिंग एंड होगा है, शायद मैंने मिस किया, मैं देखने वाला हूँ बिकॉज आई जस्ट सॉ दैट सनीश हैज flatted. Okay, so GTFO guys, we are going to definitely discuss this, and GTFO opens. हर्ष भाई, मेरा जो हैंड हिस्ट्री है वो आ नहीं रहा है क्या दिखेगा, जब मैं वो खोलूँ? नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा. हम्म, उसके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ? नहीं. नहीं, Okay, क्योंकि I अपनी guys, I साइड है just ना। quickly tell you all this. You can see this table, right? So GTFO opens two big blinds, last hand under the gun. Sanish 21 calls 2.1 big blinds with 21 big blinds stack in the cutoff. So Kevra, who's got a big stack here, 104 big blinds, he actually comes along with 6-7 offsuit from the dealer button, which is a very interesting call because 6-7 offsuit is a relatively weak hand. And flops 7-8 deuce, two spades. He picks up a mid pair. Sanish bets big, 6.3 bigs. And Kevora, now that he's called 6-7 offsuit pre-flop, he decides to come along. Um, and turn opens the magical six of diamonds for him. He hits two pair. Now he's not going anywhere. 6-7 offsuit pre-flop call किया है, flop पे mid pair आया है तो call करोगे. Turn पे he's hit two pairs. Sanish is jammed. He snap calls. Sanish has kings. He flatted kings pre-flop, which is fine, of course. But Kevora basically gets it with his 6-7 offsuit. He cracks the kings. 6-7 ऑफ इज Uh, द न्यू नट्स। yeah, I mean 6-7 offsuit. It's a definitely a very wide call. So even though I do think he's a very good player, it's something you want to mentally know, right? That he's ही इज called 6-7 केपेबल ऑफ डूइंग offsuit दैट। pre-flop, right? Against a UTG raise, against a strong flat. Okay, this is a great card for shredded chips. 5.7 bigs, yes, 12. I think you want to go in the bigger sizing so that he rips his 4x, 5x, 6x, and we can still rip turns. So I think 3.95 is good. So he can rip, if he rips, he calls, we could snap call. Um, yeah, he calls. So good luck to us. He has a 5 pair, um, नो। and we don't hit it. It's fine. A lot of equity. So these spots are spots that are going to happen. We open, he defends 5-9 suited, which is again, I think, fine. He hits mid pair, bet big. We actually betting big here, hoping that he rips it in. There are a lot of bad turns for us, like that we don't improve. Even a spade sometimes. There that like I just don't like putting in like a lot of chips on the turn and converting this particular hand into a bluff. Um, because here we get a lot of folds. Like we can even get like 7-9, which is actually ahead of us to maybe fold here. Like you might think it's crazy, but I think maybe he might just fold 7-9. We might get like ace 3, ace 4 to fold with this sizing, which is ahead of us. Um, and he rips with a 5 pair, and we have like a flip, so यप। that's fine. और काफी आउट थे अपने पास। काफी बहुत आउट से बहुत 7-8-9-4 बहुत आउट से, एंड प्लस फ्लॉप पे तो बहुत फोल्ड इक्विटी भी था. With spades, if I just had spades there, I would have gone lesser my sizing. And with actually having my overpairs, I would have gone lesser so that I would like him to call his ace 3, ace 4. ऑलविन पूछ रहे हैं, थैंक्स फॉर द इनसाइट, व्हाट इज योर बिगेस्ट विन। My biggest win is the millionaire in 2017 December. मैं millionaire जीता था स्पार्टन बुकर पे for 25 lakhs, the first place. So देयर that's यू my गो ऑलविन भाई। biggest online payout. And I've had a few similar scores on PokerStars Global, but something around those are my absolute biggest. नाइस नाइस, 40 लोग देख रहे हैं गाइस, लाइक कर दो यार सब लोग स्ट्रीम को। इफ यू आर एंजॉयिंग द स्ट्रीम एंड गेटिंग टू लर्न समथिंग न्यू, लाइक दबा दो यार। Guys, definitely, please like Harsh's stream, subscribe, whatever you all can do is just a click. And trust me, in our business, where we are putting in so much effort to run a stream to discuss these hands at absolutely no additional benefit, we really appreciate it. Like, firstly, big thank you for watching the stream.
You know, any person who's giving in their time and watching this, automatically, I would like to thank you for that. It's a big thing. And just a small like, it would support the stream a lot. So we would genuinely urge you to do it. थैंक यू समय भाई। और थोड़ा चल रहा है यार, मेरा तो कुछ हो नहीं रहा है भाई। मैं close to starting stack आ गया हूँ. We had reached double of starting stack, but now that the blinds are going up and pots are automatically becoming a little bigger. आप कितने बजे घुस रहे हो आज ट्यूसडे प्राइम में? क्या ट्यूसडे प्राइम में कितने बजे एंटर कर रहे हो आप? Tuesday मैं घुसूंगा. In fact, if I bust to the, so guys, my plan for the week, just like a very genuine poker discussion, is that मैं अगर आज क्राउन 1 भी मैं से बाहर निकल भी गया, मैं आगे भी कोई क्राउन टूर्नामेंट्स खेलने वाला हूँ for sure. I am very keen on making a stack for day 2 for this tournament. So that's one of my plans that I wanted to tell you all. But today necessarily, if I bust to 1B and थोड़ा अगर deep है and I feel like मेरे को इतना short नहीं खेलना है, I will definitely Harsh, we can put my like Tuesday prime on the stream, right? Yeah. If No I issues. Yeah, so definitely I want to stay on the stream for as long as possible. I'm anyway planning to play Tuesday prime, so we'll try to figure something where we get a stack brewing, and we can stream some good content, get some deep runs. Hopefully, it would be great for the stream. Prakash Pandit, all the best, guys. Thank you so much. Guys, we have a lot of people thanking us in the stream. So, wishing us good luck. So, thank you so much because, it means a lot. It means a lot. Exactly. And और you need a little bit of luck, yeah. Like, I believe in the saying, poker में play good, run good तो है ही. मतलब ठीक है, you play well, you run well. Like, ये तो मतलब I cannot prove it theoretically, but scientifically, spiritually भी पता साइंटिफिकली नहीं अगर prove करना पड़े. लेकिन भाई ऐसा कुछ है यार. Every time I discuss with some of my friends, fruit pros, and whenever you play well ना, चाहे वो अच्छा bluff हो, चाहे वो कुछ भी अच्छा हो, अच्छा मतलब you run स्क्वीज हो। good यार. कुछ अच्छा species हो गया ना भाई, then you're going to crack the kings and aces. या But if you played badly ना, your aces are also going to get cracked. गेट मतलब क्रैक्ड। फिर मान लो भाई कि अभी जो कुछ भी हुआ, एक हैंड बुरा खेल लिया ना तो एसेस भी आ गए ना, और किसी के थ्रीज या फोर्स दिख गए ना, थ्री या तिग्गी है तो चौगिया आने ही वाली है. वो हैंड बुरा क्यों, मतलब वो इंस्टेंट कर्मा बात करता है. वो हैंड इतना बुरा खेला तूने ना कि मैं भाई यू हैव टू गेट अ सक आउट नाउ. बस ये अब तेरा टाइम आ गया। ये big hands now on my table. 10 versus queen king versus 10s. Oh, what a hand for this guy. We'll discuss this hand after this particular hand. Like I've got two black jacks with 29 bigs. We're hoping Sunny shrips 12.5 bigs. He'll have a lot of lower pocket pairs. He will have some ace-x suited, ace 10x plus suited, I guess. We wanted to rip here a lot. He जो bets भी two bigs. Looks strong, but we will 3-bet small and get it in here. Actually, he's 12 bigs, so yeah, we can just bet 3-bet small. Jacks is strong here. He can actually rip also. Rip might get him to call with 6s and 7s. No, share more squeeze. Because there are players behind who might just snap fold. Let's see what happens. I mean, I do know where he snap rips we call. Ace 5 suited. And we hold. We picked up some chips. Let's go. Let's go. Of course, I like the fact that he makes he opens ace 5 suited there, looks very strong. But when I 3-bet there, fine, I guess. Ace 5 suited. I don't think he was really 4-bet jamming. I think he was just priced into call. Yep. Pocket 5, UDG plus 1, we will again just open. और गाइस चैट में जो भी क्वेश्चन है, जो भी तुम लोग को जानना है या कुछ भी हो दिमाग में, तो चैट में आने दो भाई, कुछ रुको मत। Guys, please, not necessarily what I am playing, not necessarily what Harsh is playing. Yeah. Any normal poker question you have, you all have questions about poker bankroll management. I tell you all one thing about myself. I know you all might not know me, but देखो ना ज्ञान बांटने में ना कुछ अलग ही मजा आता है. पता नहीं क्यों यार, मतलब वो मेरी एक ऐसी पर्सनैलिटी की चीज है. मेरे को बातें करना बहुत पसंद आता है और मैं ज्ञान ना बहुत बांटता हूँ. So if you all I genuinely have some questions, let's say for hypothetically, you're having a downswing or something like that, just please feel free to openly discuss it. Because listen, everybody's had a downswing in poker. Every good player also. ठीक है, सबके होते हैं. So if you all want to know things about poker, bankroll management, if you all want to know things about how you can, improve your game,
You want to maybe discuss a hand? Interesting spot here. He bets four bigs, has a lot of 10x, has a lot of. Oh, I think we call one street. Problem is he's not making his two pairs here into bluffs, man. Um, and we block 5x also. And why would he make a two pair into bluff here? I'm gonna actually fold it. Um, ये I know it's on the tighter side. I mean, if there were not three hearts, I would have called shitty checks, man. Yeah, I know, guys. Like, I should have maybe called. So again, I made a mistake here, which I would like to say. मेरे पास टाइम बैंक नहीं था, you know. मेरे पास टाइम बैंक नहीं था, and मैंने like थोड़ा मैं scared हो गया, you know. And he made a hand like mid pair with like a flush draw into like a bluff here, which I feel like he would have checked a lot also because he has showdown value, some amount of showdown. Interesting hand होता है यार because इसके पास sixes है. He would have called obviously if I would have come along on his full house draw, but we would have picked it up on the river. We would have got a lot of chips. So definitely, guys, a spot where हम लोग बाद में सोच सकते हैं कि थोड़े चिप्स और मिल सकते थे. uh, मैं बस यही सोच रहा हूँ कि मतलब उसके पास जितने भी ऐसे मीडियोकर हार्ट्स होते हैं, जैक क्वीन किंग, he wants to go to showdown, like he wants to try to improve his hand, so he might check them. But again, this one of those spots, guys, it's where it's very close because he's got a higher straight draw and a flush draw. This guy's got a set. So our hand is really never improving. You know, this is like the absolute best scenario कि उसके पास ट्रिप्स थे, उसके पास मिड पेयर विथ हायर एंड स्ट्रेट ड्रॉ और फ्लश ड्रॉ था, और हमारे पास सबसे बॉटम स्ट्रेट था, राइट. तो वो सबसे मतलब बहुत क्लोज सिचुएशन था जहाँ पे मैं दिस. So guys, I want to come back to what I was saying earlier, that if you all have any questions, please bring it on the chat. Harsh and I will definitely address it. We are here for you guys. Cut off opens. ये बाजू लेफ्ट वाली टेबल मत देखो गाइस, यहाँ पे सिर्फ स्पीव हो रहा है. Guys, please देखो because I think you all should definitely comment on Harsh's play and ask him questions and bring those Which questions I to me won't be able also. to I would answer. like to. No, I would. This flop is very good for our range. We have the ace of spades. Man, checks back, man. Just really near lady not tower. To be honest, oh, he's snap check by again. Ace high might just be good here, but I don't know the way snap checks. He's going for a showdown, right? Ace 9, ace 10. Yeah, ace jack. See? Jack. क्योंकि आई थिंक अब तक लग रहा है ब्लफ ही कर देता. उसका क्वीन आया कुछ होता ना, ब्लफ ही कर देता अभी तक. इतना स्नैप स्नैप चेक कर रहा है तो एस जैक है कुछ ही था. बट अगेन यार, we also had a certain amount of showdown. But yeah, again, these are spots that maybe where our showdown is just not good enough. We should go to make it bluff because we have so many 8x and 7x that should go for value. King खुला है, उसने दो बार snap check किया है. हाँ. So this spot I think I should be betting. Like those fives and I think it's still okay to fold. Oh yeah, break in 10 seconds. Yeah. Dr. Arun Goyal says you don't have to thank us for watching. It's a privilege to see Samay on a stream. Thank you so much, Dr. Arun. That's a compliment for me, and I really appreciate it. I hope you're enjoying the stream. I hope that you learn something from the stream, even if it's not necessarily poker learning. But more than learning, I think as long as you guys are enjoying it, that's just the main goal. Chalo We want to guys. make it something where you're watching like us play some of these really good value tournaments. But apart from that, also poker discussions, but also यार poker के बारे में generally life के बारे में अगर कुछ बात करनी हो, anything. This is a very good time. Like it's a Monday evening, right? Tuesday. Tuesday. Sorry, I'm playing Tuesday Prime. Yeah. Tuesday evening. So a lot of you all have come back from home after like a long day of work. Including me. So you all want to maybe just ease off, chill, dinner खा रहे हो, someone's having a beer maybe, just chill, watch a stream, good poker stream. राहुल से समय ज्ञान की बात अच्छा लाइन था. ज्ञान की बात बहुत अच्छा लाइन था. Typical something Rahul would say. I know Rahul personally. I've spent a lot of time with him. ज्ञान की Great guy Rahul. ज्ञान की बात बहुत Upcoming poker बांटता हूँ, player. अच्छा लाइन था. राहुल तो भाई. Gopal Kumar is Samay, how to improve late range to ITM journey.
guys. So Gopal, I'll be answering this a little technically because समय मैं what 1 मिनट में आता हूँ, happens आप is कंटिन्यू करो, ठीक है? मैं भी actually guys मैं quickly 1 minute का break लेता हूँ. I'm going to get a cup of cold ठीक है, coffee and I'm going to switch on my AC. So ठीक है. I'll be back in a minute. I hope this is not that 1 minute where I get up and you guys shut the stream, huh? Because हाँ, guys, that would like really make me feel bad. So हाँ, I'm going to rush. Okay, I'm going to rush and I'm going to be back in a minute. Harsh, will you wait for a minute? हाँ, Let's ठीक not है, board this time. ठीक है. सीधे तू जाके आजा, मैं आ जाता हूँ 1 मिनट बाद. नहीं, मेरा कुछ नहीं, ठीक है, urgent आप जाके आओ, मैं हूँ. नहीं 1 मिनट में मेरे आता को हूँ. थोड़ा ज़्यादा काम है ना. तो गाइस अब जाना मत यार कहीं पे, है ना? समय भाई बोल के गए हैं, तो अपन थोड़ा रुकते हैं. वो आपको आके बताएँगे गोपाल भाई आपका आंसर भी. मैं भाई ये तेरा फर्स्ट स्ट्रीम या पहले की हो? नहीं भाई फर्स्ट स्ट्रीम है अपना. और मज़ा आ रहा है मेरे को तो बैठ के स्प्यू करने में. बिफोर दिस वी यूज्ड टू हियर रिंग रिंग बजे मेरा फ़ोन. इट्स बीन सो लॉन्ग और लगा रहा. आज भाई तू पूरा बढ़िया स्ट्रीम हो रहा है, 40 लोग देख रहे हो गाइस. आज तो मज़ा ही आ गया भाई, डबल द वॉचिंग चल रही है अपनी. दबा के लाइक कर दो गाइस. Well, और आ guys, गए I हैं have समय quickly भाई. come back and just because I was panicky, मेरे को लगा कॉफी लगाने में टाइम लगेगा. मैं मिक्स फ्रूट जूस लाया हूँ, ठीक है? मिक्स फ्रूट जूस, ठीक है? वो भी कार्टन वाला मिक्स फ्रूट जूस जो लाने में मतलब लिटरली 30 सेकंड भी नहीं लगते हैं. मैंने एसी चालू कर दिया. थोड़ी गर्मी हो रही है. Our stack is looking good. We are 60% above starting stack. We चलो lost a समय भाई flip मैं आता earlier, हूँ, है which is ना? fine. हाँ हाँ, हर्ष तू आगे आ जा. मैं बात करता हूँ. I have to answer हाँ. questions. We have Gopal who said Samay, how to improve late reg to ITM journey, not from the ITM perspective, but I kind of lose too many chips in this period. Yeah, very, very valid question, Gopal, because uh, obviously after late reg, you can't come back into the tournament. So your tournament life becomes way more valuable, right? आपका tournament life और सबका भी tournament life बहुत valuable हो जाता है because now once you're out. And ITM का भी चक्कर ऐसा है कि your gameplay has to adjust coming close to ITM, right? I know these are things that you probably know, but just putting these factors down, you have to basically adjust. What I like to do is basically adjust in the sense that um, अगर late race खत्म हो गया and I have got a lot of chips, I will not try to think of ITM now, right? I will try to pressurize players who have lesser chips where I can take good spots and because मेरे को लगता है उनसे chips मिलना थोड़ा और easier होगा. हर एक situation different है, हर एक dynamic different है. But if I have a lot of chips, I will try to play a little more aggressively, maybe put a little more pressure in certain spots, maybe small blind versus big blind, play a little more aggressively, in spots where I can maybe bluff a little more. I'll try to accumulate a lot of chips ताकि शायद मेरे पास बाद में कोई in the money का pressure नहीं आए. And एक बार अगर मैं in the case of मैं mid stack हूँ या short stack हूँ, so I have to play accordingly. If I'm short stack, I will have to play carefully. I'll have to take in spots where I can pick up chips easily. And अगर मैं बहुत close हूँ ITM के, then you have to adjust a lot. Maybe sometimes you have to make tighter folds. Sometimes maybe winning chips is not that valuable. तो हर एक ये जो फैक्टर मैंने अभी बोला है ना, ये सब चीजों को you have to like bring into your adjustments, and I hope that's answering your question to a certain level because ये बहुत technical question है. एक पर्टिकुलर ये नहीं है, तो मैं थोड़ा जनरली बता रहा हूँ वेयर एडजस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लेट रेंज के पहले भी सेम खेल रहे हो पूरी तरह से और आईटीएम के क्लोज में भी पूरी तरह से सेम खेल रहे हो. आपका पोकर डेफिनेटली एडजस्ट होना चाहिए आपके साइज के चिप्स के हिसाब से. आपका जो स्टेज टूर्नामेंट में उस हिसाब से आपका पोकर गेम प्ले एडजस्ट होना चाहिए. फिर आपने पूछा ये तेरा फर्स्ट, राहुल पूछ रहा है समय भाई ये तेरा फर्स्ट स्ट्रीम है या पहले किए हो. Poker, this is my first official poker stream. I'm very happy that I've Harshal been streaming for a while, and I told him a few times that even I've been having ideas to stream, but I've just not got the time. Unfortunately, I've been busy with a lot of theater rehearsals in Bombay, and I don't. I think it's a lot of injustice to streaming if you are not regular and if there's no fixed schedule. So I'm hoping that in the future I can maybe figure out something जहाँ पे मैं थोड़ा और consistency है मेरे schedule में and मैं एक stream शुरू कर सकूँ. But this is my first poker stream. Rahul, Gopal asked me something else also, not from the ITM perspective, but I kind of lose too many chips in this period. Yeah, so you will lose a lot of chips if you start thinking about just coming in the money.
Like ऐसा नहीं होना चाहिए. आप ऐसी सिचुएशन में मत आओ कि like if you're coming close to the money, you are playing like you can't get too tight. Like I'm not saying be too loose and वो adjustment होना चाहिए, but इतना कॉन्शियस मत हो जाओ अपनी गेम प्ले की वजह से that you are either losing too many chips or because here when you're saying that uh, in this perspective I kind of lose too many chips in this period. uh, Maybe you're like over adjusting or maybe you're getting too conscious about it. वो नहीं होना चाहिए. I think start off with that. अरे कोई मुझे ध्यान नहीं दे रहा है क्या बगल पे इसके 856 नहीं हो शिवेंद्र कुमार देव आता है सही. मैं हूँ आता ही बीच बीच में शिवेंद्र. सॉरी आई माइट हैव मिस समथिंग दैट यू आर सेइंग. डिड यू हैव एनी क्वेश्चंस? हर्ष वेलकम. आ गया भाई मैं. व्हाट्सअप. यो यो. थोड़ा सा चावल खा के आया हूँ फटाफट. चावल खा के मेरे को भी अभी बस पोहे मिल गए थोड़े. पोहे गरमा गरमा पोहे खाएंगे. बढ़िया. Like a mid. This is the most irritating thing which I know everyone can relate to. भाई डिनर और लंच ना बहुत दिक्कत हो जाती है. पोकर खेल टूर्नामेंट कसम से खेलने भाई के बाद 5 मिनट में खाने की 5 मिनट आदत हो में गई मेरे को. 5 मिनट में बाथरूम भी जाना पड़ता है. ठीक है. और डिनर भी करना पड़ता है यार. लेकिन मजा आता है यार रोटी सब्जी अच्छे से खाने में. जल्दी जल्दी खाने में और डिनर का मजा भी नहीं आता. दैट्स वन थिंग आई रियली डोंट लाइक. Dr. Arun was saying, having a chilled beer in this scorching heat and learning from about poker. I am so happy that you are having a good time. Dr. Arun, where are you from? The scorching heat. बॉम्बे में कभी बारिश शुरू हो गई है. Which is, I love the rains. Harsh, what is your opinion on the rains? Do you like rains? मेरे को तो बिल्कुल नहीं पसंद भाई. बिल्कुल नहीं पसंद. मेरे को तो खाली एक बहुत दो बार पसंद. जब होती है स्टार्टिंग में तब ठीक है. उसके बाद तो भाई. मयंक कुमार मंडल सिंह दोनों ब्रेक में रेडी हो जाओ शिप करने के लिए. थैंक यू मैन. बट ऐसा टूर्नामेंट ना मतलब ऐसे ब्रेक में ना शिप करने के लिए लाइक बहुत टाइम है. बहुत टाइम है. डेफिनेटली लाइक एवरी आवर यू वांट टू प्ले. आई थिंक माय माइंडसेट इज कि मेरे को अच्छा पोकर खेलना है. जो होगा होगा. ओके वेट सॉरी आई स्नैप क्लिक फोल्ड. आई थिंक आई एम बाइंडली ओपनिंग दिस. वी हैव 33 ब्रेक्स यार. डेफिनेटली. हमने तो ब्रेक में दूसरे बाइन की तैयारी कर ली है भाई. ठीक है यार पोकर. हम्म. Definitely opening 19 off here. This is a big hand here. Let's see what happens. He raised, got the A7 suited. Check, bet, call the cut, check, river, he jams, call. So there's definitely some wild gameplay happening here. 5-8 suited game or about here. Again, we are going to be betting this. Wow. 1/3 is nice. We can get him to fold a lot of like ace. I mean, his ace 10 ideally should call one street here, but maybe king jack off, 10 jack suited. Yeah, that's good. Very happy. Yeah. Yeah. So I like this picking up pots and immediately after that we get rewarded guys. 9 queen of suit से pick up hand किया अभी ace king of मिला. Again quickly खोलेंगे hoping to get 3 bet now. He snap calls to strange Sadhu who I don't have much information on but is playing. So really hard. Like these are playing like machines. Like he snap called to the big line. Interesting. Again, we are going to see bet this. This is very good for our range. We block aces, kings, which are a big part of our range. We block some king queen off. He can call with ace jack off, just to light off. क्या स्नैप We would मार have रहा था. liked the jack on the best card. Or the thing is, do we want to bet this twice? The thing is, we are not even getting him to fold queen jack, queen nine. We block king queen. I'm going to bet big here. We hate if they're. We hate it. Wow, man. Lady not just snaps. The thing, the way he snapped now, we only beat Jack 9 spade, Jack 8 spades. Do we convert this into a bluff? Yeah, we do. But he's never holding a queen, is he? Oh Folds. nice. So we go for it, guys. We have a lot of so what bluffs do we have there, right? We are doing that with the kings, we are doing that with the aces, we are doing that with the ace queen. These three hands are still doing it. We actually might just even do it with queen king. And
Crazy, We crazy. can have Jack 9. We can have. I actually think like a queen might just fold there. Obviously, you're getting some 10 Jack to fold. But yeah, that was kind of a play on the higher variance side. Uh, I went for it. Also, I don't have enough information. Yeah. This guy is playing, you know, so snappy snap. मेरे को लग रहा था थोड़ा वाइड है वो मतलब शायद वो वाइड कॉल भी कर देता but चलो it worked for me. Sometimes you have to plays. See, Kevola thing really lose man and he's losing chips. So I think this last 15 big blinds of his are going to come in only very quickly. Hopefully we get them. Uh, let's see. Virtual Mind says, Samay, you look cool. Thank you so much, Virtual Mind. I really like your name because your name says Virtual Mind and he's calling me cool. So it's like, I feel like AI is complimenting me. Dr. Arun is asking, he generally said that when you start, you should play cash games, and once you have a strong basic, then maybe transition into tournament poker. What is your say on that? I'll quickly say this: cash games and tournament poker are two very different styles of poker because cash games is like आप generally you're playing 100, 200 bigs deep. So cash game का the way you study it, the way you approach it is different. Again, it's like absolute money क्योंकि अगर आप 100 रुपए का बैन खेल रहे हो या 1000 रुपए का बैन खेल रहे हो आप एब्सोल्यूट खेल रहे हो लेकिन टूर्नामेंट पोकर बहुत अलग है लाइक यू हैव टू एडजस्ट इट एज पर ब्लाइंड गोइंग अप so I would say if you're just starting off, try to play one thing that you prefer. Like, अगर आप start off कर रहे हो तो maybe start playing lower stake tournaments in which you are enjoying that. उसमें क्योंकि अगर पे आउट मिले तो ROI बहुत ज्यादा होता है. अगर आपने 100 रुपीज का बाइन टूर्नामेंट सपोज हाइपोथेटिकली जीता तो आपको शायद 8-10 हजार मिल सकते हैं. एंड कैश गेम में शायद ROI कम होगा 100 रुपीज बाइन में. So whatever you enjoy playing, I would definitely like suggest आप वही खेलो. I'm also making kanda poha. What a coincidence. I'm a dentist situated in Lucknow as of now. I'm basically from Ambala, Haryana. That's nice, Dr. Arunji. Nice to meet you. And I'm happy you're enjoying this stream. We have Saswata Biswas asking, till at which stack size you prefer comfortable to take re-entry and which stage of the tournament you prefer to take entry. Okay, so Saswat, this answer is like, it's a very bankroll related answer. बिकॉज अगर आप लाइक कोई टूर्नामेंट में सैटेलाइट करके आए हो जिसका बाय इन हाई है आपके बैंकरोल के लिए देन आई हाईली रिकमेंड कि आप री एंट्री मत लो. लॉट ऑफ प्लेयर्स आई थिंक दे गेट कैरिड अवे. वो लोगों को लगता है लकी बाहर आ गया. लाइक लेट्स से अभी मैं आपके सामने स्ट्रीम कर रहा हूँ राइट हर्ष एंड हर्ष लेट्स से आई गेट अ कूलर नाउ आई लूज माय केसेस टू किंग्स. I will get very immediately tempted, right? मैं stream कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ. I get very immediately tempted to take a re-entry, But hypothetically, if my bankroll does not permit it, I have to be able to be like, no, guys, मैं एक और buy नहीं ले सकता. I'm going to switch to a lower tournament, that ability has to be there. So definitely your re-entry and comfort level will depend on your bankroll. बहुत बड़ा bankroll है, आप comfortable हो तो जितने buy लेना है लो. See, now guys, I'm going to pick up this note because I think Kevora has like had a lot of chips. Now he lost chips. He's playing aggressively. Definitely want to get into a hand with him where we have a little bit of an edge and get some chips. अमन मेरा एक Not to दोस्त say है. that he's like this is like a beautiful hand now, अमन guys. बोलता है कुछ तो चल रहा है. Small blind. Kevora lost chips. He's playing a little aggro. I want to see GTF open UTG. Already opened that hand. Okay, man, we have to get it in here. Like. Decent spot, like the GTF word opened that hand. Wait, in which bada hand was which I should have info. There was some hand. Yet, whatever. We are going to be ripping this. Good luck to us. Pocket jacks, 19 bigs. Someone is squeezing this if they have it, man. Queens, oof. Can we get lucky? No. Uh, Sevens के we're against out, क्या? no. Oh yeah, we're good against 7. So we have 17 bigs. This is still close to starting stack. I mean, this is just one of the hands. Okay, this guy 3x's. Yeah, I'm going to flat this. Welcome, Aman, Harsh. We're going to flat this, try to realize equity because he has been calling a little wide. I noticed that.
Like jacks and queens, that we can't do much. There's not much to talk about that hand. It's just a standard hand. Sometimes these things happen. This particular hand that I'm playing now, I think you should focus on that. It's interesting because he opens 3x. Yeah, I mean, really have to kind of, like, I don't know, man. Some of these players don't. Like, does he have queen king here? But we have to call one street with the backdoor spades. Yeah, I'm gonna call one street. He can have a7 suit. He can have a lot of a6 other suited. Now his non-pocket pairs will get a little cautious. Yeah. Now we go. The way he snap rips. Yeah. Now our strategy is going to change. Like some of the things that we discussed. Now we are short. We are half of starting. We lost jacks to queens. We lost that last time. So now I'm not going to be like, मेरे को tournament में रहना है ये वो this that. If I get a spot for 10 big blinds, I'm going to take it because I need to chip up, right? We want to go to day 2. We don't have enough chips like to make it to day 2. So we will take our spots. चलो समय भाई एक बुलेट तो भाई. What do you do, Samay, apart from poker? Gopal, I was assisting on a film. It's called Brahmastra, releasing this year in a few months. So I was not acting in it. I was assisting on it in direction and production. And for the last 8-9 months, I've been acting. So I've been doing a lot of theater. I'm going to take this spot actually. A7 mid position. It's close. It's not necessarily a jam, but I'm going to jam. We get a lot of folds. We get some calls. Even if we get called, we have good equity. This is a particular hand that like I can get called with king queen also, right? King queen suited, king queen. So yeah, we pick up the hand, which is good. We like, I mean, a7 hearts is not the hand we want to like get snap called by. It's a very close spot. Yeah, I'm just seeing my jack hand on the stream. Can't do much, guys. We got it in good against the sevens, guys. The UTs had it, so you know. Maybe if I had tens, I would have maybe not ripped. Would have been समय close. भाई ये जो स्टैंडर्ड Tens. स्पॉट्स होते हैं ये तो मतलब हाँ करना ही था. स्टैंडर्ड स्पॉट्स होते हैं हाँ जो कि ये तो करना ही था. हाँ स्टैंडर्ड स्पॉट्स बोल रहा हूँ. स्टैंडर्ड स्पॉट्स होते हैं ना जो, हाँ. तो उन उसमें अपन मतलब कभी कभी डिविएट भी कर सकते हैं ना स्टैंडर्ड से, Definitely. डिपेंडिंग ऑन द लाइक So, डिपेंडिंग ऑन व्हाट are you फैक्टर asking if शुड I बी should have डिविएट. folded jack there? Are you हाँ saying, are you like hypothetically asking if I हाँ should have folded jack there? या So, agreed with you. The only thing is that um, in that particular spot now, जिस हिसाब से hand गया है, like the deviation will be too much. जैसे मैं बोल रहा हूँ, tens होता या nines होता ना, शायद मैं deviate कर भी देता, like you know, nines के साथ में बाहर निकल भी जाता. But jacks वो particular spot में ना मेरे को बहुत ज़्यादा strong लगता है. जैसे how that guy ripped sevens, I knew I'm dominating very big part of that guy's range, sevens ka. Okay, and I think UTG also will have a lot of like folds, you know. ट्रू ट्रू शायद UTG ace queen भी fold कर दे, you know, which is I'm flipping against. So I particularly find jacks very strong there, and also कि वो ऐसी situation कि केवल a man jack 7-10 off, he just gave away stack. I mean, nothing against him, but I feel like him trying to make chips here, he lost his chips. Definitely made a few mistakes. We could unfortunately capitalize on it. GTFO 18 had the hands for the chips. So you're right, you can deviate, but I नहीं think मतलब मैं it's वही such पूछ a रहा था like कि such a क्या हाँ. क्या वो होते हैं फैक्टर्स कि अपन स्टैंडर्ड स्पॉट से डिविएट कर लें मतलब. तो बहुत ज्यादा एक तो बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो आईसीएम है, जो अभी यहाँ पे बिल्कुल भी लागू है ही नहीं. ठीक है. राइट. बिल्कुल भी आईसीएम. सो गाइस आई एम गोइंग टू फ्लैग दिस ये हैंड. वाला जो पार्ट है ना आईसीएम पे अपन को डिविएट करना चाहिए स्टैंडर्ड से, वो आप थोड़ा हाँ, so एक्सप्लेन ICM करो ना. ICM is, yeah, because the thing what happens is na, in ICM your chips का value changes a lot.
like अभी in the sense मैं rebuy भी कर सकता हूँ और I know like जो भी buy-in है ये वो this that, but you see that I have lost like a flip, I've ran jacks to queens, you know, I've had so many hands, but still I'm still in the tournament. You know, I know I'm short stacked, but the thing is, we're still in a tournament because like there are other hands we've played where we picked up chips, you know, where we've not pulled at anyone else. You're understanding? And that's why I'm still in the tournament. Where we've ran that bluff with 1 second, I'm just thinking whether I should check rate this or bet big. Yeah, bet big. I have bottom pair with a flush draw. We are just calling inferiors. Can we pick up chips? Nice. So that's what like the sense if I would have played some hands differently, you know, where I didn't play aggressively या मैंने chips नहीं उठाए होते, शायद मैं out हो जाता, you know. तो वो realize करना बहुत जरूरी है according to me. मैंने कुछ हैंड गलत भी खेले होंगे, कुछ हैंड बहुत skeptical है, कोई अलग तरीके से खेलता होगा, वो सब ठीक है. But I think कि you know most overall ठीक खेलना से मतलब advantage रहता है. तो इसलिए मैं ज़्यादा deviate नहीं करूँगा, like you know in the sense वहाँ पे इनके sevens होते हैं और he would have folded. I would have got a lot of chips now. I would have reached like 50, 60K. Then my dynamics would have changed. I also like to play sometimes where I get a lot of chips. I can play aggressively and get a big stack going into, you know, so particular strategy pasand hai. I've seen a lot of players do it, and I think it works very well. And who does not like having chips there? You know, ट्रू, चिप्स तो सबको चाहिए भाई. yeah. और क्या चल रहा है चैट में? चैट काफी बढ़ गई है. Yeah. There are a lot of questions, guys. Sorry, I'm just eating, drinking, and also focusing on the tournament. Talking to Harsh, yeah, playing. And you can see I've been having a lot of hands. We ran jacks, we had ace jack spades, and that was quite an interesting hand because this guy obviously like he just the X. We don't know his range, and we kind of float flop, but he just rips turns. So he probably had it. I don't know. इधर है. हेलो हेलो ऋषिकेश भाई. व्हाट इज अ गुड वॉल्यूम इफ यू हैव अ गुड bankroll? Bankroll of 100 binds like every day on a week. So this guy just pure chips, man. I think he's pure. 10 big racing offsuit guy is very good and we're going to repeat. We are now very open to get called. Even if Saman picks up a pen, calls good. Open to get called by ace jack, ace queen. This is the best situation. Um, GTFO might even call it king queen or maybe. Yeah, I think definitely call king queen. Here we want to call. Here agar we out, we out. Matlab, bhai. But we are looking for a from whoever. Lady Nose got a lot of chips, and Lady Nose will be kind of loose. I mean, chalo, we pick up a pot, good, up to 10K, little close to starting. Sorry guys, if I'm delaying on the answers, it's just because I've got a hand. Arunji, you said what's a good volume if I have a good bankroll of 100 binds like every day or in a week? I think every day or in a week would depend on how often you're playing. But if you have 100 binds, then you should like what you should do is 100 is a quota on the lower side for tournament poker. You want to ideally have 200-300 buy-in, but just the stakes you're planning to play. So giving a quick example, if I have 100 rupees, and the buy-in is 1 rupee, that's 100 buy-in. That's a little on the non-conservative side, tournament poker wise. It's a little aggressive, which is fine. If you're playing low stakes and you're confident on the stakes you're playing, it works. But if you're playing the little higher stakes and if you're playing games that are a little harder, the ones you're not dominating, then I would suggest कि आपके पास 200 या 300 buy-ins हो. So the volume would totally depend on like again हर एक tournament अलग होता है. How many tournaments you want to play. And if you're talking about multi-tabling, I would want to say that you should just play tournaments you're comfortable with. Like guys, I am very comfortable playing 7-8 tournaments also. But आज ये मेरा पहला स्ट्रीम है, ठीक है? तो स्ट्रीम मैनेज करना, वीडियो पे बात करना, पोहा खाना, जूस पीना और ये एक टेबल खेलना, इसके बारे में बात करना, मेरे लिए काफी है, you know. So maybe if I come on the stream again, I'll try to play 2 tables. But today for me, this is already a lot. है ना मेहनत का काम समय भाई.
मेहनत का काम तो है यार, स्ट्रीमिंग तो बहुत मेहनत है, हमें बहुत मजे का काम है। मजे का काम तो है भाई। This class Agreed. is asking in a particular tournament how many times you maximum are comfortable taking re-entry. So I would take re-entry. Basically, if I'm playing a tournament where I feel I have a lot of edge, even with a short stack. Like चलो re-entry में 8 big blind मिल गए या 10 big blind मिल गए, मुझे लगेगा कि मेरे पास उसमें बहुत edge है, तो मैं बहुत बार re-entry लूंगा. I will even take maybe 5-6 re-entries if I feel that I can. If I make a deep run, I'll make a lot of money. तो ऐसे बहुत टूर्नामेंट्स हुए हैं जहाँ पे मैंने 4-5 बाय-इन्स लिए हैं और मैं आई हैव डन वेल, बट इफ इट्स अ वेरी हाई tournament, like, I don't want to lose that kind of money. You know. Okay, very interesting. And under the gun, Strain Sazu opens 3.2 big blinds. We have Ace Jack off for 12 bigs, the big blind. Very tricky spot because when you open that sizing under the gun, the first to act, that's under the gun. उसके पास मेरे को लग रहा है वीक हैंड होनी नहीं चाहिए. And if I jam here, it's a very bad jam because it's not a bluff. It will be a bad bluff because we get called a lot. This is actually a hand after he calls, I might just even fold. I'm going to actually fold this hand. Uh, yeah. He calls. I just don't like it. Like 3.3 bigs, 3.2 bigs. With ace queen off, I would have maybe just ripped it here. But ace jack off, I just don't have even the implied odds made a good hand. So ace jack off is just a fold here. He just snap rips 35 bigs in an 8 big blind pot. So he literally has like ace king with the ace of clubs or ace queen with the ace of clubs. So, yeah. So I'm gonna just fold the ace jack there. चलो भाई, एक हैंड तो जीता मैं स्ट्रीम पे। क्वींस क्वीन That's से good. डबल अप मिला है एक, थोड़ा अब स्टार्टिंग स्टैक आए हैं। So I definitely think like there's chips to pick up from these two guys, and even him, he's lost chips. So even though I have like 8,500, 9,000, I have a feeling that we might like come back. Let's go. Positive vibes, play good, run good. हो I'm also 40 noticing लोग। that this lady not towers opening a lot. He's been he's been playing a lot, like, and he's playing really fast, like robot Jason. Snap, 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 snap. Maybe we can get some timing tell, get some advantage. Let's see. और समय भाई, आपको मैं और एक राइट देना चाहता हूँ। Hmm. जो भी लोगों के आपको क्वेश्चंस या कुछ भी इंटरेक्शन अच्छा लग रहा है ना, हाँ, उन लोग को आप पिक कर सकते हो और मेरे को नाम बता दो सिर्फ। उन लोग को अपन एक कल के 4:30 पीएम की टिकट गिव अवे कर देंगे। 100%, 100%. I'm going ठीक है। to just quickly open a tab here on my other screen हाँ हाँ। and like keep this work. तो गाइज So ये आज guys, का there are गिव अवे क्राइटेरिया है। a lot of advantage of being interactive on the stream हम्म, because uh, समय we'll भाई get के an पास 18 आज draw सुपर tournament पावर है। tomorrow. आज मेरे Huh? पास मैं बोल रहा हूँ, आज समय भाई के पास सुपर पावर है। आज मेरे पास कुछ Hmm. वो नहीं है। आज समय भाई करेंगे गिव अवे अपने हिसाब से। तो गाइस, जस्ट कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चन। अब ऐसा मत करना कि भाई गिव अवे के लिए क्वेश्चंस पूछने लग जाओ, बट हाँ हाँ, वो बी कोई मत एक्टिव, करना. बी एक्टिव एंड बी इंटरैक्टिव एंड लेट्स गेट द मैक्सिमम वैल्यू। अब तुम लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हो ना, तो उससे मैं भी सुन सुन के सीख रहा हूँ भाई, बैठ के बेसिकली। सो कीप द एनर्जी गोइंग एंड लेट्स मेक दिस स्ट्रीम अ ग्रेट सक्सेस। एंड शेयर करो और भी आपके कोई दोस्त हैं उन लोग के साथ। एंड या Do you have any friends who you think would like to watch a poker stream? Would like to watch two players who've been playing for some time play? How do you manage poker with your work? It's very hard for me to manage with my job. It is very difficult, especially if you're doing a full-time job. But मैं जो industry में हूँ, there's also a lot of like off days. Um, when I'm working on a play hypothetically या मैं rehearsals कर रहा होता हूँ, तो जब hectic rehearsal schedule होता है तो it gets tough to play poker, नहीं होता. But then there are days where there are no rehearsals and all. तो उन दिनों में बहुत time मिल जाता है. So I like to capitalize on the days that I'm not very busy with my work, and I do understand the situation with full-time job. I do think it will be very difficult. So what I would maybe suggest is that आप Sundays को खेलो, and if you have an off day, and जो भी दिन आप अच्छे से आराम करके, sorry to cut you, man, 2.5 bigs, 10 bigs, AJAC,
of snap opens UTG, such a sick spot because I'm going to fold this also. I think I can get a better spot. These are just those super marginal hands, very close. When he snapped 2.5x's UTG with a 16 big blind stack, the worst hand he has is like, I don't know, King Queen off. He just snapped tips, man, at the flop. Thank you, Arun I'm bhai. going to mark. I'm going to mark him also red. So guys, these are like a lot of tough spots. Like ace queen I would have called because I think then he would have had a lot of ace jack, ace tens. But ace jack off is kind of close. He rips. So even lady not tower is definitely playing on the side. You cannot be mark him there. So Gopal is suggesting that Gopal, you play on Sundays and play the days maybe, when you are done with your job, you can come home and maybe, take a nap, a good 1 hour nap and get up really fresh. Um, and maybe start playing the tournaments जो शाम को शुरू होते हैं like 6-7 p.m. जो आप मतलब एक दो ace 10 off UTG very close 1 2 3 4 5 8 way 8.87 bigs. I'm gonna go with it. We get called here a lot with a lot of better hands, but I don't want to chip down to 6.57 bigs in the next two hands, and I'll just take my shot. Probably behind here. Yeah, we need to all get lucky, and we do get lucky. I said clips against ace queen. So Stream good run. yeah, so I think guys, this is the thing. I feel like I've played good till now, and that's why I'm running good. Plus वो stream का थोड़ा जो extra effort आता है वो आता है. उसका भी थोड़ा run good pending था, right? मैंने तुम लोग को बोला था, आप लोग को बोला था कि short stack को, but I feel like I'm going to turn around. And now I'm feeling with this perfect queen jack offsuit on the big blind where my hand is like a little under rep. It's a fold. I don't know what I'm saying. Small blind rep. Ten versus king queen. Okay. So I think those two spots where I folded ace jack offsuit. राहुल का क्वेश्चन स्किप कर दिया क्या भाई आपने? Oh shit. Future question. Where is your question? Rahul, can अच्छा, you? ये बोल रहा है कोई बताएगा ये हर्ष क्या कर रहा है पहले किंग जैक पे अभी ट्रूस 4 पे. भाई ट्रूस वो जो 4 हर्ष क्या कर रहा है कि सवाल है ना वो आप हर्ष को पूछो क्योंकि मैं ये स्ट्रीम पे इसलिए नहीं आया हूँ कि हर्ष हर्ष गलत क्या कर रहा खेल रहा है? है. हर्ष क्या कर रहा है? मेरे साथ स्ट्रीम करना है कोई मेरे को ऐसे ट्यूशन देने थोड़ी आया ये गलत किया ये यहाँ पे गलत किया. वो तो उसके लिए अलग से अपन कुछ टाइम निकाल लेंगे समय भाई के साथ. हैंड रिव्यू सेशन भी कर लेंगे आप लोग बोलोगे कभी तो. हाँ guys, definitely if you all want my opinion on a hand that Harsh played, मैं बोल दूंगा. But ऐसा अभी I'm not like this that Harsh हाँ is playing right wrong ये वो. हर नहीं किसी का poker gameplay अलग होता है. हर ये किसी बात big hand jacks versus queens on my table. Lady not tower wins this big pot 100k stack. Wow. We are back to a little above starting stack. Oh shit, queen 7 off. Yeah, actually, is the folder with his stack. To score off. I queen 7 suited. I would have just raised to 2.5 bigs. Mm, not only me, I think on chat, Max, viewers are not professional. So during your chasing leaderboard, how do you manage next day schedule after grinding deep last night? During your chasing leaderboard, are you asking about me chasing the leaderboard? Because I generally don't like now the IOPC leaderboard or any leaderboard. I'm not really chasing because I'm not being able to play. I'm not being able to put in that volume. But if you're asking for yourself, then if you're doing a full-time job, then chasing a leaderboard is very difficult because I have done a lot of like leaderboard hunting in the past, and leaderboards के लिए it's more than a full-time job. Then the poker is like you need to get up and you're playing tournament all the way till the last tournament in the night. So when you're chasing a leaderboard, the way you're playing the game is very different. आपको rebuy भी last level तक लेना ही पड़ेगा. Whatever the buy-in, whatever this and that, because
if you're going for leaderboard points, you need to play every tournament till you can play till late edge. You need to put in volume. It's very difficult with a full timer. Oh, I'm seeing my ace time as the ace queen and I hit 2 pay on the flop. Okay, small blind calls 2.2 bigs are ace queen off here. Big blind fold 5-5-7, no heart. Um, we just bet small and fold to our ace. We do have the best hand here a lot. Like he can slap king queen, ace jack, ace 10. Yeah. Pick up some more chips. Guys, almost 20k. Should you follow certain charts or play according to table dynamics like raising, calling, or three betting? Definitely to learn like the basics and get a good hold of the things you should follow. Charts pado. Charts are going to be this, but to go beyond charts is very important. Like like you should know the table dynamics, raising, calling, three betting. ये सब जानना तो बहुत जरूरी है. Following charts will help to a certain way. Like mathematically जानना कि 10 बिग ब्लाइंड के साथ क्या करूं, 8 बिग ब्लाइंड के साथ क्या करूं. समय भाई सिर्फ इंग्लिश में बात करते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, रोहित साहब आप बोलो तो मैं सिर्फ हिंदी में बात करूंगा यार, ऐसे मैं बोलो. अरुण जी आप सेइंग इट्स जस्ट दैट रोहित कोई जो मेरे को इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ रहा है ना, मैं थोड़ा ऑटोमेटिकली ह्यूमन टेंडेंसी की वजह से इंग्लिश में रिप्लाई कर रहा हूँ. बट मैं हिंदी में बहुत कंफर्टेबली बात कर सकता हूँ. तो अगर कुछ ऐसा हो जो आपको नहीं समझ में आया और मैं हिंदी में दोहराऊं तो प्लीज पूछ लेना, मैं हिंदी में दोहरा दूंगा. तो सॉरी अगर मैंने कुछ कहा जो आपकी समझ पाए. अरुण जी तो यार डेफिनेटली फॉलो चार्ट्स एंड लेकिन टेबल डायनामिक्स, रेजिंग, थ्री बैटिंग ये सब में एडजस्ट तो करना पड़ेगा. ऑल ऑफ दीस थिंग्स आर इम्पोर्टेंट. हर्ष क्या हो रहा है? वी आर नॉट टॉकिंग मच अबाउट यू. अरे यू हैव मेरा टेकन तो अभी so many bullets, let's be चल very रहा है frank. 1.5x पे चल रहे हैं अभी तक स्टैक पे. सेकंड बुलेट. 1.5 like second bullet. फर्स्ट बुलेट मैंने स्ट्रेट डूस फोर ऑफ डिफेंड किया था बिग ब्लाइंड से. फिर कुछ 10-11 बिग ब्लाइंड थे मेरे पास, उसने सी बेट किया, मैंने पता नहीं क्यों कॉल किया. फिर 9 बिग ब्लाइंड थे, फिर टर्न पे डाल दिया भाई. ठीक है, हाँ. किया आपने कुछ. टॉप पे भी जैम कर सकता था वैसे तो, बट ठीक है. इसमें क्वीन से थोड़ा, इसमें भी थोड़ा नीचे ही जा रहे थे. 20,000 से 12,000 पे आ गए थे स्टार्टिंग स्टैक से. फिर क्वीन से डबल अप लिया, फिर केस क्वीन से थोड़ा ट्रिपल बैरल किया कुछ नहीं लगा के. तो अभी डिसेंट 30K के आसपास है स्टैक. चल रही है गाड़ी धीरे धीरे. Hi Mohit. Mohit is saying someday I did ITM and bursted in good spot with a single bullet. Someday bursted even after firing 2-3 bullets. Is it a bad day or bad play? So मैं दोनों चीजों को ऐसे डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकता. इट्स लाइक सिंगल बुलेट और 2-3 बुलेट चीजें एक सेक्शन हो गया, ठीक है. क्योंकि आप 2-3 बुलेट फायर कर रहे हो ना, उसका मतलब यही होता है कि आप वो टूर्नामेंट फिर से री एंटर कर रहे हो. इट्स लाइक अ न्यू टूर्नामेंट, ठीक है. क्योंकि जो बाइंग गया वो तो गया, राइट. वो कैसे गए? तो अभी आप जो खेल रहे हो वो एक नए बुलेट के साथ खेल रहे हो, तो वो एक पूरा नया टूर्नामेंट ही ले लो आप उस हिसाब से. एंड एक सेकंड, आई एम जस्ट गोइंग टू डिफाइन दिस हैंड. Ace 4 off, Queen 6, Queen, beating some King Jacks, some 10 Jack suited. That's it. But I don't think our hand is good enough to defend. Yeah. We have to fold this. Don't improve much. Back. एंड आपने हाँ, सो वो एक जो बुलेट्स का है वो तो अलग ही चीज हो गई वो. एंड सम डेज यू बर्स्टेड इवन आफ्टर मतलब टेकिंग 2-3 बुलेट्स. वो फर्क नहीं पड़ता है. आप ना व्हेन यू आर बस्टिंग फ्रॉम द टूर्नामेंट ना, यू जस्ट इवैल्यूएट दैट स्पॉट. आप उसके बारे में सोचो. आप आप उसी के बारे में सोचो. वो जो हैंड आपने खेला है ना, बस्ट हुए, वो चाहे आईटीएम के बाद हो चाहे टूर्नामेंट में लेट हो, आप उसी को इवैल्यूएट करो. क्योंकि वो 2-3 बुलेट का वो सिंगल बुलेट से उतना वो इसका उससे रिलेशन नहीं है. तो बैड प्ले हो सकता है, बैड डे भी हो सकता है. आपने जो पूछा, अगर आप अनलकी हो गए ये और आपने लाइक हैंड थियोरेटिकली सही खेला, तो वो बैड डे हो सकता है. और आपने अगर हैंड में गलती कर दी तो वो बैड प्ले हो गया.
So that is totally depending on how you play it. I'm bursted 22 on Sunday Monster with a single bullet. Today 1 p.m. and 4 p.m. busted AJ versus AK and Flush versus Full House. How can we take this? Take it मतलब swallow कर लो, खत्म, भूल गए. ऐसे होना चाहिए, भूल गए. जैसे अब मेरा आधा घंटा पहले वो जैक्स वर्सेस क्वींस होता ना, अगर मेरा क्वींस भी होता और उसका जैक्स भी होता ना, खत्म बात. हैंड ओवर ओवर. या इफ अगर आपको लगे कि मैंने हैंड बुरी तरह से प्ले किया है, गलती की है, तो उसको इवैल्यूएट करो. 18 bigs is so off to if he rips so close, man. मेरे को लग रहा है अगर फिर if GTO for it also so sick defense. 3 kings, that's good for us. We don't need to bet much. We have the best hand a lot of times here. I think betting 1 pick is good enough. Yeah. Like other players, तो हाँ आपने बोला या आई वाज 22 संडे मंडे, तो हर एक टूर्नामेंट ना अलग होता है. आप उसको कंपेयर करने के चक्कर में जाओ ही मत. आज एस जैक वर्सेस एस किंग हुआ, फ्लश वर्सेस फुल हाउस हुआ, ये सब चीजें तो पोकर में होती है. आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते. ये तो होने वाला है. लाइक आपको आपके एसेस क्रैक होने वाले हैं, ये होने वाला है. आप हर एक टूर्नामेंट को इंडिविजुअली देखो एंड प्ले इट लाइक दैट. I decided to flat ace and diamonds here. Good stack. I think 20 big blinds. I like to flat it. Don't need to rip it in. I don't really get called by worse. Don't pick up any equity. So yeah, guys, we've not been like really hitting hands post flop. Huh? You see all the hands that we picked up, we mostly had to like semi bluff. I don't really like to bluff this hand. 4 ways I have to just give up. I don't. Ace of clubs on the turn is an interesting card. Oh, it's an interesting card. Small blind, big blind should check. If he after the gun checks, I think we bet and fold to a raise because nobody raise bluffs here. I think we just bet a sizing that a flush draw calls. Even some queen king might call, queen jack, king jack, queen jack, queen 10. We hate getting raised here. Someone does a sick raise bluff here, manna padega. Like we are putting us in a vulnerable spot. Yeah, fuck, man. But you know what? He calls in a small blind. He's not making sixes, eights, worse aces. He's not doing that as worse things. So I think it's a good spot to, lose 3.5 big blinds and river pay, not lose more chips. कि मैं चेक करूं फिर रिवर पे कॉल करना पड़ेगा. I think this particular player would have called his clubs and hearts, would not have made the raise. He did it, good play. भाई ऐसे इम्प्रूव होके फोल्ड करना कितना मुश्किल है ना भाई मेरे लिए. हाँ नहीं वही, बट द थिंग इज लाइक वही यार, बट द थिंग इज इम्प्रूव होके भी ना, मतलब उसने स्मॉल ब्लाइंड से कॉल किया है, यूटीजी एंड माइन, तो ही हैज सेवंस अ लॉट एंड समटाइम्स मे बी इवन नाइन्स दैट ही डजंट वांट टू थ्री बेट बिकॉज़ इसके पास 92 बिग ब्लाइंड्स है, तो वो नाइन्थ भी शायद थ्री बेट नहीं कर रहा है, 90 बिग इफेक्टिव. तो सेवंस नाइन उसके पास बहुत है. उसके पास एस क्वीन ऑफ भी हो सकता है, एंड उसके जो भी हैंड जो यू नो मेरे को स्नैप में, मतलब इतना वो टर्न पे गुड हूँ अगेंस्ट दीज गाइज रेंज, and they are calling a lot of their draws. So I think it's a good bet fold. Biswas says, at what stage you would like to see yourself 5 years down the line? I am recommending to take poker as a profession. So right now, I mean, I would take it as I am playing poker semi-professionally. So it is my primary source of income, if I had to say that. But yeah, it's not my full-time thing. I still pursue, like I'm pursuing theater full-time, acting full-time. So for me, ideally, if आप पूछ रहे हो 5 years down the line, the ideal scenario would be that I'm a theater and commercial successful actor, and I'm still playing poker. Whether I'm traveling and playing in live events or whether I'm playing online events from my phone.
I want to definitely act in things. I want to do film, web series. I want to do theater, ads, everything. And उसके साथ साथ I want to be playing poker. I think सब manageable है. Obviously situations आएंगे जहाँ पे मैं एक्टिंग की वजह से पोकर टूर्नामेंट नहीं खेल पाऊंगा. बट पोकर की वही अच्छी बात है कि टूर्नामेंट्स रोज होते हैं. पूरी दुनिया में लाइव हो, ऑनलाइन हो, इतने सारे वेबसाइट्स हो, इतना स्पेस है पोकर टूर्नामेंट्स के लिए. तो wow, guys, we're just not hitting anything, man. You open ace queen off, small blind comes along, big blind, 6-9, 7, completely rainbow. Again, we're just like bleeding a bit, but these are the pots we really want to pick up, but I don't want to make this into a bluff. To make it into a bluff, I have to just bet so much. We Now Eureka bets and we have to fold. This is the way of poker. He bets half pot here. He bets pot. Wow. And we would have improved on the river, but wow. This is big pot book. Jacking off again. We're getting those marginal hands with these marginal stacks. Really on the stream, guys, you are getting like the really tough content to play. Like ऐसा नहीं कि kings मिल रहे, jacks मिल रहे, खोलो यार, अंदर डाल दो. Proper tough spots like jacking off 12 bigs. This is I think does okay as an open also. I will open it. I will open it. I want to be the aggressive this. Um, I want to play like these hands also. It sucks if someone goes all in like. Oh my. Oof. Tilt 83. Is he really ripping worse than this? Is he really ripping his time? Sucks, guys. Just those spots, ace queen, jacking off, trying to play aggressively doesn't work sometimes. Again, we have lost chips. We've come back down. A lot of tough spots. That ace we improved. I'm not sure if he got bluffed on the turn. मेरे को नहीं लग रहा है वो bluff था 4-way pot में with two people behind. He would bluff on the turn. He could have had a7, a9 suited, hit better two pairs. And plus, improve much more extent. I don't have any good questions, so I'm just going to sit back and enjoy the stream. Rushik, that also works. I really, in fact, like the comment because that's good. You don't have to ask questions. Just letting us know that you're present here, and that's a lot. पता नहीं हिंदी में टाइप करने में चैट स्किप हो जा रहा है राहुल भाई. कर दे रहे हैं, हो जा रहा नहीं, तो कर दे रहे हैं. कर दे रहे हैं. अरे उस कौन कर राहुल, रहा है? आप. मैं. अरे वो राहुल ने बोला था ना ऊपर कि मेरा चैट हाँ. मिस कर रहे हो ये वो, तो ये बोल रहा है कि पता नहीं हिंदी में टाइप करने में चैट स्किप कर दे रहे हैं ये लोग. नहीं 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 भाई, मैं सब पढ़ रहा हूँ, सब पढ़ रहा हूँ. वही गाइस टफ मिड पे है. वी आर गोना बेट दिस. Calls. 6 is a particularly bad count. Yes, 6-7. Oh man. Let's just check and hit a 5. Come on. 3. Oh, maybe slow down. Yeah. We could be good here. Yes, we're good. Guys, much needed 5 big blinds. Small versus big. I think he called us the ace deuce. 10 king diamonds. Okay, so that how it didn't, I don't know. Uh, definitely something like this is the hand you want to always go all in with. That sizing, 10 big blinds. But luckily, he just calls and we had to see a free flop, pick up equity. He has king jack diamonds, which again now that board you hate calling with, but he calls. Check, 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 check. Gives us, doesn't bluff into that. Great spot for us to pick up chips. ऑलविन ने क्या Back पूछा है? 12. क्या कैन हुआ? यू प्लीज एक्सप्लेन how you study during the early stage of learning? It's very difficult, I feel, but over time we get used to. But how can we make it effective? या मैं एक ही चीज कहूंगा. फर्स्टली तो पोकर की एक बात जो मैं बहुत मानता हूँ इज दैट जो कंपटीशन है ना,
and Fedor Hall said this. It's not my original, but I believe in it. He says that who's a professional poker player, ये जो competition है ना बहुत lazy होती है poker में, क्योंकि as poker players ना हम लोग को पढ़ाई नहीं करनी है, like नहीं होता, बस नहीं होता, हम लोग ज़्यादा लोग पढ़ते नहीं है poker, and it's a fact. So there are a lot of different ways to improve. Starting में you can either play a lot. एक तो playing से definitely over time you realize things. अलग-अलग sports you get exposed to. बहुत सारा कुछ होता है. So playing तो will help, but obviously studying I think should be supported with playing. So guys, this might be a hand acing suit in the dealer button. I think we want to open up this just because he has so many big blinds. क्या यार? Oh, we get caught in a small blind. Jack 9. Oh my god, 10? 10 justice? Oh my god. So, okay, guys, it's looking slim for us. We lost another one and we lost Ace King to Jack 9 suited. मेरा भी टॉप Called पॉकेट फटा, for अभी देखना स्ट्रीम पे। शायद ओवरप्ले कर दिया मैंने, बट देखना एक बार स्ट्रीम पे भी 3 मिनट बाद। मैं देखूंगा, लेकिन guys, just an unfortunate spot. ठीक है, 8 big blinds. He thinks like I'm wide enough that Jack 9 suited has a lot of equity. मैं शायद नहीं कॉल करता, but he called it. He the chance. And he had a lot of equity against ISC here. And he hit his jack. So होता है, can't do much. We have 3.5 big blinds. अभी मेरे को थोड़ा स्लिम लग रहा है, मेरे को लग रहा है अभी थोड़ा मुश्किल होगा. Lot of tough spots. Again, see, sometimes ace king loses to jack 9, you can't do anything. Jacks run into queens. But I think overall, whoever has been on the stream, I'm happy that I was able to, really show so many hands. ऐसा नहीं है कि I just ran good and I just kept winning big pots and क्योंकि पोकर ऐसा नहीं है यार, यू डोंट ऑलवेज डोमिनेट, समटाइम्स वो एक बाइन में कुछ भी हो जाता है. So many hands I've lost and I'm like still in the tournament. I'm going to still try to come back. And हाँ, there are some places मैं भी lucky हुआ, ace 10 beat ace queen, but ये पोकर की नेचर में है ही. हर्ष, वो किसी ने पूछा था ना, what was the answering, मैं वो भूल गया. क्या चीज? अच्छा, व्हाट डू यू किसी ने कुछ आंसरिंग? पूछा था. स्टडी इन द इनिशियल स्टेज ऑफ पोकर। Study, yeah, study. So I was saying that definitely support study, and what I would suggest is like if you are getting a little lazy to study, आप जैसे आज हम लोग का स्ट्रीम है, जैसे आज मैं बात कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ टेक्निकली मैं कुछ चीजें जानता हूँ, आप शायद मेरा कुछ सुन के या देख के कुछ सीखोगे. सिमिलरली यूट्यूब पे बहुत कंटेंट है, ट्विच पे बहुत सारे लोग स्ट्रीम करते हैं. सो ऑलवेज वॉच गुड प्लेयर्स, वॉच पीपल वेयर यू कैन, वॉच यूट्यूब कंटेंट, वॉच हैंड एनालिसिस. समटाइम्स कुछ लोगों के लिए वीडियोस से लर्निंग थोड़ा इजियर रहता है. तो यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट है जहाँ पे हैंड्स एनालाइज हो जाते हैं. तो वो सब देखो. और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उससे और इजियर वीडियो देखो, बिकॉज कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा, लाइक somebody or the other will be explaining and you will start understanding things. So expose yourself to as much content as you can. And shit, इसका लेट रेंज खत्म हो रहा है एक राउंड का क्या, 40 minutes. तो yeah, I mean, I don't think I will now if he buzz this, I don't think I'll take a bullet today. So I will have 14 big blinds. True. Even though my table is good, yeah, like I feel on my table I can win a lot of chips even if I rebuy. So it is a decision. I have not still made up my mind. I'll decide. Let's see. So yeah, definitely study, watch streams, see videos, YouTube, learning videos, watch, and if you can afford, if you're very serious about poker, and then you can do research on buying some course. There is nothing personal that I promote or I'm associated with, but some great guys out there, Ben CB, and then there's Ben CB 789, which is Raise Your Edge. There is BBC Poker. There are a lot of good poker streamers and coaches जिनसे बहुत कुछ सीखने के लिए है. So लास्ट चैट फिर से मिस करा तुम लोगों ने. ये राहुल, तू बता मेरे को पहले, तू यहाँ पे यूट्यूब पे मेरा तेरा मिस हो रहा है या उसके हर्ष के उसमें, क्योंकि मैं यूट्यूब का सब पढ़ रहा हूँ, मैंने किसी का भी नहीं स्किप किया है. मेरे तो सारे मैसेज भी एंजॉय नो एनी मैसेज, मेरे तो सारे मैसेज भाई नंबर एनी मैसेज. तुम्हारे चिल. Sats was asking you prefer online or live poker. मेरे को ऑनलाइन में ये पसंद है कि आप बहुत सारे टेबल्स खेल सकते हो, वॉल्यूम काफी डाल सकते हो.
एंड लाइव पोकर में वो नहीं कर सकते हो. एंड लाइव पोकर में आई थिंक वो एक लाइव का फील थोड़ा अलग है, वो फील अलग है लोगों के साथ खेलना. तो प्रिफर मैंने ज्यादा ऑनलाइन खेला है, तो मैं ऑनलाइन खेलूंगा. गाइस द हैंड वी आर गोइंग विद इट. वी हैव 2.5 big blinds with king 5 offsuit, and he can still have a lot of like bus hands. We are hoping to get it in like against queen 9, queen 8, queen 10. He Good luck. calls with a. Okay, we are very bad shape. He had a king, he hits a flush. Okay, so guys, that is GG for us in the ground. प्राइम लगा रहे हो क्या? Uh, मैं इस पे आ जाता हूँ. Tuesday Prime. Tuesday, I'm going to play Spotlight also, but I'll come on to Prime for now. हाँ तो GG मेरे guys, को I hope from that one you all got मेरे को something. वैसे ही आप आप going लिंक to शेयर कर दो ना. Prime, but Prime में बस 20,000 चिप्स है. मैं वो लिंक भेज रहा हूँ तेरे को. जो भी आप टेबल चालू कर दो उसका लिंक भेज दो बस. हाँ, एक सेकंड. मेरा भी जीजी हो गया. आपने देखा क्या? नहीं नहीं नहीं, अच्छा एक नहीं सेकंड देखा. में ये सिलेक्ट स्क्रीन करता हूँ. विंडो IOPC Tuesday Prime. No audio sources. Copy to clipboard. आज मैंने देखो डिस्कॉर्ड पे ये हाँ हाँ, डिस्कॉर्ड पे ट्यूजडे पिन प्राइम किया. वाला लिंक भेजा है, इसको बस स्ट्रीम पे डाल दें. So guys, like you can see, I like to adapt this attitude where I feel like I played overall okay, and definitely I might have made mistakes. So the learning is never ending, but I'm going to take it very positively. We we just got it in where we thought is good, and नहीं हुआ बस. I don't think like बहुत पोकर में हारने के बाद सीखा है कि you can't get very personal with a single tournament. There is no entitlement in poker. So, I don't want to be the kind of guy, I don't want to be that sore loser kind of guy. वीडियो स्टक तो We नहीं got to हो Tuesday रहा है. Prime now, so I don't know if Harsh has put the stream for you guys already, but we've come in here with 27 big blinds, which is again not very deep, but we have a decent stack. We will try to chip it up here. And this is again a very big tournament. इसका first prize is 6.3 lakhs. So, मतलब बहुत, है. मैंने तो टू पे Hopefully डाल मैं दिया यार. इसमें टॉप stack टू पे. बना सकता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए. टॉप टू पे डाल दिया यार मैंने. Oh, और ओनली आई हैंड Saspati दैट इज sir, what is the reason behind your username? Limitless. पहले तो मैंने ये लिमिटलेस जब मेरा थोड़ा हुआ, जब फिल्म देखी थी ब्रैडली कूपर वाली इन विच ही गेट्स लाइक वो पिल विल लेके लिमिटलेस हो जाता है. मैं मतलब फिल्म से काफी इंस्पायर्ड था, बट आई फेल्ट लाइक I like to live my life doing a lot of things, like I enjoy theatre, I enjoy acting, I've worked in filmmaking, I have, for some time worked in finance also, and I play poker, and I enjoy swimming, dancing, playing football. There's a lot of things I do, MMA. So I think just the things I've been exposed to, मैं बहुत सारी कुछ चीजें करता हूँ, so I like to feel like limitless, like I like to feel large. So that's the reason behind the username. At the end of the day, poker is all about winning money. So what's your tips on how to manage bankroll that makes it more profitable? Chetan is saying. Yeah, Chetan, you are absolutely right, man. At the end of the day, वो थोड़ा pride, glory जो भी है, but winning money is the most important thing. Yeah, because if you don't have money, then how are you going to play poker, right? And you need to win money. So bankroll management to tips on how to manage bankroll that makes it more profitable. If you think that you are not comfortable with a stake, lower your stakes. So this bankroll management that you're asking, if you feel कि मैं 3,000 के टूर्नामेंट में अच्छे से नहीं खेलूंगा या जो भी है, lower the stakes. Play 1,000 rupees tournament. Start winning in the 1,000 rupees tournaments. Play stakes where आप comfortable हो bankroll wise and आप gameplay wise comfortable हो. ऐसे होना चाहिए कि आप ट्रिपल बैरल ब्लफ, अगर आपको लग रहा है वो ब्लफ अच्छा है तो कर सकते हो. ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि टूर्नामेंट एक्सपेंसिव है आप ब्लफ नहीं कर रहे हो. तो यू हैव टू बी वेरी कंफर्टेबल कि आप जो भी टूर्नामेंट या स्टेक्स खेल रहे हो आप बहुत कंफर्टेबल हो. सो आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. वीडियो स्टक हर्ष भाई, बोथ द वीडियोस आर स्टक नाउ. ओके ना, ओके. हर्ष आपने नहीं फिक्स नहीं. कर दिया ना वो. हाँ हाँ. अब मैं गोना गिव दिस अप. पेज दिस वी हैव टू. Days where yeah, straight. So good give up. So sometimes like bluffing is also bad.
देवव्रत सिंह has come here. Hey, good luck guys. रोहित कुमार, good luck. Thank you. अरे समय ये जब मिस वाली लाइन बोलता हूँ तो पढ़ लेते हो और मैं चैट मेन चैट में मिस कर देता हूँ। अरे कौन सा मेन चैट? मैं जो चैट देख रहा हूँ उस पे तो आप हो। मेन चैट मिस करो समय। कौन सा मेन चैट? पता नहीं भाई। राहुल, what main chat are you talking about यार? मैं तो सब देख रहा हूँ। ये मिस है यार, बताओ, ठीक है ठीक है। जेल जेल वेलकम यार हर्ष, गाइस, लाइक कर दो यार सब लोग। 45 पीपल आर वाचिंग गाइस, मजा ही आ गया आज तो। मेरा यूजुअल वॉचिंग रहता है 20 25 मैक्स। good guys. Thank you so much for coming in, and I आज hope you भाई are enjoying. 45 लोग देख रहे हैं। We have unfortunately busted the crown, but we are ये both मैं in the Tuesday Prime. लिख देता हूँ ना ये बात अब मैं, कि अपन क्राउन और प्राइम नहीं खेल रहे हैं दोनों भी। हाँ ठीक है, you can put Tuesday Prime 33 like GTD. मैं ट्यूसडे। 9:30 वाले ट्यूसडे स्पॉटलाइट में भी घुसने वाला हूँ क्योंकि there's a tournament guys, value mine, day 1B 660 rupees buy-in, 35 lakhs GTD. मैंने लगा रखा है Whoever's, इस। जो भी यहाँ पे प्रोफेशनल नहीं है, सेमी प्रोफेशनल है, who Yep. wants to, I think this is a very good tournament for you all to play. 35 lakhs GTD, value mine. इसके बहुत सारे legs हो रहे हैं एंड फाइनल डे संडे को होगा, तो जैसे अर्लियर वी स्पोक अ लॉट अबाउट बैंकरोल एंड हम लोगों ने इतने सारी चीज़ों के बारे में बात किया, तो ये तरह के जो वैल्यू टूर्नामेंट्स है खेलना जरूरी है, especially when you're building your bankroll and I think अभी स्ट्रीम पे मेरा 5-6 डायमंड वाला हैंड आ रहा है which I raised and then I gave up after the turn, which तो is नाइन good टेन वाला there. हैंड मेरा आपको दिखा क्या? नहीं, जल्दी बोल क्या हुआ था, मैं बोलता हूँ. 9 10 ऑफ था मेरे पास। नहीं, 9 10 सूटेड था स्मॉल ब्लाइंड पे। कट ऑफ ने ओपन किया था, बटन ने लिम्प किया था, मैंने भी लिम्प किया, बिग ब्लाइंड ने भी लिम्प किया, और फ्लॉप पे आया था 7 9 10। ठीक है। हाँ तो मैंने डोंक हाफ पॉट बेट किया 4 लोग में। हाँ. ठीक है। कट ऑफ के अगेंस्ट हाँ। ठीक है। फिर फिर कट ऑफ ने फ्लैट किया, बिग ब्लाइंड ने फोल्ड किया, कट ऑफ ने फ्लैट किया, और बटन ने 15 या 20 बिट्स कुछ जैम किया। मेरे पास 45 थे, 43 बिट्स थे मेरे पास, और द कट ऑफ वॉज कवरिंग, तो मैंने रीशव कर दिया 9 10 के साथ, एंड कट ऑफ शोड 8 जैक, एंड 8 ही जैक नट. हैड जैक क्वीन बिग ब्लाइंड। Wait, flop was 7 9 10 हाँ। and you had 9 10. या सूटेड। Oh, so 4 में था ना फ्लॉप पे, हाँ। तो ये हैंड ना जहाँ पे स्टॉप टू है वाला, आई हम्म, डोंट लाइक लीडिंग आउट इन द सेंस के देखो जो वैल्यू मिलना है ना, हम्म, देखो मोस्टली ट्रिपल स्ट्रीट वैल्यू ऐसे 4 में ज्यादा मिलने नहीं वाला है, इट्स अ वेरी ट्रिकी हैंड, यू हम्म, नो तो आई लाइक चेक कॉलिंग फ्लॉप एंड देन इवैल्यूएटिंग, लाइक आई एम नॉट सेइंग कि देखो फोल्ड करना है तो पैसा तो मोस्टली जा ही रहा है. हम्म, अगर तूने 9 10 सूटेड कॉल किया है, 9 10 7 खोला हाँ। है, देयर आर वेरी फ्यू कॉम्बोज यू आर लूजिंग टू, राइट? बट 6 मैं 10 8 इतना स्ट्रेट ही बोर्ड है ना, तो पर वही स्टेटी बोर्ड है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मतलब वो इतना फ्लॉप पे अग्रेसिव खेलने की जरूरत नहीं है, यू नो मतलब मेरा क्या था थिंकिंग कि अगर इफ समवन इज ड्राइंग, मतलब कोई जैक एक्स है या फिर 8 एक्स है या फिर कुछ है, तो टू सी द नेक्स्ट कार्ड आई वाज लाइक चार्जिंग बेसिकली। तो या ये। आई अंडरस्टैंड बट so I know, like, I generally like see when you're not the pre-flop aggressor, हम्म, when you have मतलब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट मेरे को लगता है कि लाइक ऑन द लाइंस ऑफ बीइंग बैलेंस्ड, हम्म। ऐसे लीड आउट करना चल ठीक है, मे बी शायद इट्स नॉट, आई एम नॉट सेइंग फोर वे लाइक, भी था ना मतलब। बट इट्स लाइक आई योर ब्लफ लीडिंग आउट, you have to ask yourself that question, हम्म, like are you ever leading out a 8x? No. So मतलब you're also giving away your hand, right? हम्म, You are not allowing bluff to be in your hand. Are true। you leading out a hand like 10 jack off also, or you know
are you leading a hand like 8-10 off जहाँ पे तेरे पास टॉप पे और ओपन स्ट्रेट ड्रॉ है, तेरे को इक्विटी रियलाइज करना है, इक्विटी राइट? रियलाइज तेरा अभी तक करना है। स्ट्रेट बना नहीं है, ट्रू ट्रू ट्रू। सो तू वो सब हैंड रीड आउट कर रहा है क्या? बिकॉज तेरे पास 8-10 ऑफ है और किसी भी के पास पॉकेट 9 होंगे, तो डू यू वांट टू पुट द मनी ऑन द फ्लॉप? नो, लाइक you can, or let's say you have 8-10 and someone has 9-10, you are now drawing to only a straight draw, right? Your 8 and 10 is also not good. So with these marginal hands now, Harsh, I prefer, you know, controlling it. You know, कभी कभी देख डालना पड़ता है, you know, अगर तेरे को लगे वो बहुत बेट कर रहा है और उसके बाद ब्लफ्स हो सकते हैं, then you can't do anything with 9-10 top two there, right? You have to call. लेकिन सामने से इतना aggressive होना, मतलब I think it is a little tricky. बस मेरा वही था कि 4 वे पॉट है तो थोड़ा वो कर लेते हैं, छान लेते हैं थोड़ा। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं बट यार, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन तो भी यार, लाइक तेरा हैंड वही लाइक वही हो जाता है, then it gets very tough to, you know. वो बात बराबर है कि Yeah, मतलब I'm बैलेंस not नहीं है। saying तू easily निकल जाता हाथ से, लाइक तूने अभी 9-10 प्री फ्लॉप कॉल किया है, 9-10-7 खुला है, तो मतलब even you are very strong hand, right? Because you are beating like ace 10, you're still beating jack queen suited, you're beating queen 10, 10 king suited. अब 8 मेरे को तो 8 जैक ही दिखा दिया ना उसने, क्वीन जैक के अगेंस्ट तो ठीक है। हाँ, अभी 4 वे है एंड अभी ऐसा टूर्नामेंट है जहाँ पे इतने मतलब there are a mix of players, right? There are good players, there are some semi-professionals, so they are going to have all kinds of hands. तो वो भी बट ठीक मतलब है। मानना पड़ेगा, डिस्काउंट नहीं कर सकते थे, किसी के पास 7 भी हो सकते थे, 7 भी कहीं जा नहीं रहे। बात तो सही। बट चलो अपन इतना घुस गए अपन हैंड में एक बार, ठीक है, डोंक कर दिया हो गया, उसके बाद वो शव पे अपन फोल्ड कर सकते हैं 25 बिक्स की। अभी तक ये पॉट इतना बड़ा हो गया है, पॉट कितना 15 बिग्स तो हो गया होगा। 5-20 का हो गया था। वही अभी इतना तो यू आल्सो लाइक इन द मन, लाइक यू आर लाइक प्राइस्ड इन। ट्रू। Guys, just to notify you all, I have also registered for the Tuesday Spotlight, which is a 2.2k buy in 15 lakh GTD. अगर इसमें भी स्टैक बन गया एंड यू नो ट्यूजडे प्राइम से निकल गए तो वी कैन आई कैन ऑलवेज शो यू ऑल दिस टूर्नामेंट। मैं अभी 2 टूर्नामेंट्स फिलहाल खेल रहा हूँ। ऋषिक इज आस्किंग व्हाट योर पेरेंट्स थिंक अबाउट पोकर। तो ऋषिक स्टार्टिंग में कॉलेज डेज में थोड़े स्केप्टिकल थे, बिकॉज मतलब यू नो लाइक most Indian parents, poker is not like the ideal thing they would want their son or daughter to pursue. लेकिन पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद एंड आफ्टर लाइक यू नो consistently having good payouts and making good money, then they were like supportive about it. Now my parents are generally also quite chill, so you know I'm not like, they've been very supportive. But I guess हर किसी की वो situation में नहीं है. But if you are really good at poker, and I think if you're doing very well, then down the line, I think the parents will, you know, agree and they will support you only. And मैं उनको like दोष नहीं देता हूँ यार, they are rightfully skeptical because they don't understand. You know, हम लोग पोकर खेलते हैं, हम लोग खुद नहीं पता हम लोग कितने अच्छे हैं, कहाँ तक पहुंचे, हाउ प्रोफेशनल वी हैं. So I think उनको प्रूव करना मतलब is a very big thing. Because as being subjected, how do you discern that you are lacking the aspect of the game? Please put some light on that. Being subjective, how did you discern? Uh, Sorry, Sasuda, I'm a little finding it a little bit difficult to understand your question because it's being subjective. How did you discern that you are lacking those aspects of the game? Please put some light on that. If you're, वो you उसका know, if you पूरा talk about कंटिन्यूएशन में है क्वेश्चन। specifically, like, व्हेन यू स्टार्टेड स्टडीइंग पोकर फ्रॉम वेयर डिड हाँ, यू स्टार्ट अंडर when समवन we, और बाय योरसेल्फ? uh, तो मैंने किसी से प्रोफेशनल कोचिंग नहीं ली थी.
मैं बहुत कुछ देखता था, किसी के अंडर ऐसे ऐसे शुरू नहीं किया था, आई वुड से ओन सेल्फ, बट आई वाज वेरी ऑब्सेस्ड, लाइक व्हेन आई वाज 16 17 18, आई वाज वेरी ऑब्सेस्ड विद द गेम एंड आई वुड वांट टू, आई वाज वेरी इंट्रिग्ड, मेरे को जानना था क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, जो जो लोग बड़े हाई स्टेक्स पोकर खेल रहे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं। पोकर का भी जो एक मेटा होता है एक थोड़ा वो है, इट हैज इवॉल्व्ड, लाइक द पोकर दैट यूज्ड टू रन अराउंड 7 8 years बैक, टूर्नामेंट पोकर, वो थोड़ा अभी 5 6 साल में स्ट्रेटेजी चेंज हुई है, इतना पढ़ाई वढ़ाई लोगों ने किया है, सॉल्वर्स में इतना कुछ कैलकुलेट किया है, वो गेम भी काफी इवॉल्व हुआ है। बट दैट टाइम जब मैंने पढ़ाई वढ़ाई की थी या जो भी जो कुछ भी किया था, वो खुद ही किया था, या बोला था ये आईटीएम होते ही मेरे रिचार्ज कर देना दोनों से, कोई पूरा देख रहा यूट्यूब देख रहा हूँ एक्स्ट्रा रिचार्ज से, पर तो ही है। राहुल तू रिचार्ज करके हमारा स्ट्रीम देख रहा है तो थैंक यू सो मच। मोहित असं मुझे पोका है समय ब्रो। आइडल की बात करूं तो this is a tough one because there are a lot of players who you know are very good, like जब मैं खुद streams देखता हूँ Twitch पे, I like to watch BenCB 789 stream a lot, I get to learn a lot, he's the founder and owner of Twitch. So he's definitely one of my poker idols in that sense. I really admire the way he's runs a business plus poker and everything. And gameplay wise also he's solid. So Ben CB I think will be one of my top in the list. And I am also fascinated by a lot of Indians who play like some really good poker. In fact, one of my best friends, my made a bachpan ka best friend who's become very good crusher now. His name is Siddhant Piplani. He plays by Pluribus on Spartan Poker. Um, the thing is, he doesn't coach me, but because he's been playing so well, um, I try to like review my hands with him. I try to understand a lot from him. Okay, what are the mistakes I'm making and things like that, and he helps me out. And I see a lot of creativity in his game on the higher stakes. So again, more than idol, like I just really admire what he does with the game. Whenever I've seen him play, I think it's quite good to watch him, entertaining. Chetan says, yeah, what you said is totally true. Before when I started playing poker and get busted with a few thousand rupees, I used to take all my winnings price to cash table thinking that I will double up. Chetan, that's the like worst thing to do. Trust me. Most of now it comes a very high variance category because in poker you want to like ideally just you know you want to have a good solid bankroll, you want to play stakes that you're comfortable with and make money in that. Making money is very important. And Chetan, you only said it earlier, right? Making money is super important. So don't do that. I say, if you win a few little bit in some tournament, उसको लेके कैश गेम हाई से कैश गेम में मत जा। Like मैंने भी किया है, सबने किया है, ऐसा हो ही नहीं सकता है किसी ने जिसने ये सब नहीं किया है। सबके साथ होता है, वेरी नॉर्मल है, डोंट बी टू हार्ड इन सेल्फ। बट हाँ मतलब लॉन्ग रन में अभी वो सब मिस्टेक्स नहीं होती। इवन इफ आई लूज टुनाइट, आई प्लेड गुड पोकर, मैं चैन से सोने वाला हूँ। मैं अभी कोई वेबसाइट पे कैश गेम खेलने नहीं जाने वाला हूँ, मेक माई मनी बैक। यू नो मैं थक गया हूँ तो मैं सोने वाला हूँ। वो होना चाहिए, वो एपेटाइट होना चाहिए कि बस अभी ये एंड ऑफ द डे इट्स लाइक अ स्पोर्ट। अभी मैं हाँ, I'm putting in money and I should be ready to lose the money also. Because I know my good days will come, like when I'm playing good poker, मेरा deep run होगा, मेरे पैसे आएंगे। तो वो क्विक कैश वैश के चक्कर में I'm very happy you brought this topic because इसके बारे में मैंने आज अभी तक बात भी नहीं की है। And this is something that happens a lot, right, Harsh? We want to make that quick money. Shit, टूर्नामेंट पोकर में 10,000 आ गया, चल फटफट 20,000 की ओमा में बैठ जाता हूँ। मेरा 10,000 तो आ ही जाएगा वापस। और पता 20,000 चला भी दस चला जाता। हजार तो 10,000 टूर्नामेंट का गया, वो 20,000 ओमा के चक्कर में 50,000 चले गए। फिर अभी 60,000 डाउन हो गए। अब यार फिर बैठे चैन की नींद भी नहीं आएगी, अगला दिन भी खराब, नाश्ता भी ठीक से नहीं खाओगे, सोओगे नहीं अच्छे से। यार नहीं चाहिए मगजमारी ये सब, मुंह लटका के बैठे हैं फिर। हाँ। फिर गर्लफ्रेंड से भी अच्छे से बात नहीं करोगे, मम्मी पापा से भी अच्छे से बात नहीं होती, फिर मूड ऑफ भी हो जाता है। यार नहीं खेलना ऐसा पोकर, यू नो आराम से खेलो, प्ले स्टेक्स या कंफर्टेबल विद। बहुत होता है भाई, मेरे से तो अभी भी हो जाता है कभी कभी।
टिल्ट पे नहीं जाके नहीं, ना ऑफ कोर्स। अकाउंट में मतलब ये अपन तो कुछ मतलब अमाउंट बहुत डालते हैं नॉर्मल अकाउंट में चीज। टूर्नामेंट्स के हिसाब हाँ से। फिर टूर्नामेंट्स पूरा प्लान हो जाता है, फिर लास्ट में जो बचे होते हैं अकाउंट में पैसे कैश टेबल्स पे जाके स्प्यू कर देने का टिल्ट होके। ये बहुत करता हूँ मैं भी। कम नहीं करना है नहीं, ये ऑब्वियसली। होता ही है यार। लाइक सभी के साथ हुआ है। एंड सभी के साथ हुआ है। आई थिंक बहुत जरूरी है टू नो दैट नहीं करना चाहिए। एक गलती हो गई है, लाइक एंड अगर आप, हाँ, अगर आप कैश गेम खेलते हो और आप वो स्टेक्स खेलते हो तो खेलो, मतलब बट अगर मतलब वो हिट एंड रन या क्विक मनी के चक्कर में ना, वो पोकर नहीं खेलना चाहिए। ट्रू। क्योंकि पोकर में ना, अगर क्विक मनी आ रहा है ना, उतना ही क्विक ठीक ज्यादा भी है। जाएगा भी। वेरी ट्रू। और समय भाई कोई लोग मिले क्या गिव देने के लिए? हाँ आईडीज नोट डाउन कर रहे हो कि आप बताओगे मेरे को बाद हाँ, में? मैंने किया है, 2 आईडी नोट डाउन की है। बढ़िया। फिर आपको बताऊंगा सर। आप लास्ट में बता देना जिनके भी आप नाम नोट डाउन कर रहे हो। 100%, 100%। उसमें से अपन उनके नाम बोल के आईडीज ले लेंगे उन लोग के। ओ हाँ हाँ। ठीक है। ग्रेट। और 15 लोगों तक के अपन नाम दे सकते हैं। तो खुल के बांटो आप टिकट्स, किसको भी बांटना है। 15 लोग। हाँ 15 लोग तक दे सकते सो ट्यूसडे प्राइम में गाइस, द टेबल आई एम स्ट्रीमिंग, आई विल जस्ट क्विकली अपडेट ऑल के, ज्यादा कुछ हुआ नहीं है अभी तक। वी आर बिट शॉर्ट हियर आल्सो। स्टार्ट ही शॉर्ट किए थे, बट आई थिंक मैं मेरे हैंड्स देखने जब तो शायद ज्यादा कुछ आया नहीं है। ज्यादा कोई हैंड्स हुए ही नहीं है समय आया। वो एक ही 5-6 सूटेड खोला था, which we got away with on the ट्यूसडे स्पॉटलाइट भी मैंने रजिस्टर किया है, लेकिन उसमें अभी 50 बिग ब्लाइंड है स्टार्टिंग स्टैक। पॉकेट 6 से 15 ब्लाइंड अंडर कर मैं ओपन करूंगा। एक से ओके, आई फ्लॉप मिड सेट, वेरी गुड, 13 बिग्स। और wondering if I can trap। मैं यहाँ पे स्मॉल बेट करूंगा 25% पॉट, सो दैट वो क्वीन किंग एस क्वीन भी शायद फ्लोट करते। बिग ब्लाइंड भी है। Okay, that's good. Hoping he has a jack, तो jack तो move करेगा नहीं। Again, we don't need to bet big here. 3 bigs, you want him to call। या तो वाओ, 6-7 उसको पे डाल दिया। वेरी क्लीन रन आउट फॉर अस। अगर डेविड लेमन के पास 4-5 है तो है। वाओ हैं। वाओ। सो गाइस, हियर डोंट गेट रिजल्ट ओरिएंटेड कि मेरे को टर्न पे बड़ा बेट करना चाहिए था, ये वो। इट्स वन ऑफ दोस वेरी सिक हैंड्स, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग में स्ट्रेट ड्रॉ था, एंड लाइक our hand didn't need that much protection, because जब 9 खुलता है टर्न पे, उसके पास 7-8 नहीं है, उसके पास 8-10 नहीं है, उसके पास 10 क्वीन नहीं है, एंड उसके बाद अगर डूस 4 और डूस 5 भी है, he does not want to call those gut shots, so the only straight combos he has there is 4-5 offsuit or 4-5 suited, you know um, जो शायद टर्न पे 4-5 अगर हार्ड्स होते तो शायद टर्न पे चेक रेस भी कर देता। So it's fine that like our hand is very strong there. It's fine that एंड प्रॉब्लम है हमारे पास सिक्सेस है यार, उसके पास एस 3 पर कुछ कम जैक्स वो सब होंगे, व्हिच माइट जस्ट कॉल टर्न स्ट्रेट। सो दैट्स फाइन, वी हैव इंस्टा रीबॉट, नीड टू थिंक अबाउट दैट। I have a hand here, Tuesday spotlight. That goes.
It's also one of the most important questions. What would you like to suggest to maintain mental health? Interesting question. Hmm. Poker and mental health. I will talk about that. Just give me a minute. My low hands. I think we call this once. It's a good card for a Yeah, beat out सुनने वाला हूँ और मैं रिवर जैम करता किंग ऑफ डायमंड्स अरे यार ये कहाँ से आ गया ये ऑल इन था Thank you. चलो कोई नहीं yes that was like a semi bluff मैं डायमंड्स को फ्लशेस में कन्वर्ट कर सकता हूँ उसके पास एस हाइज है जो मैं टर्न पे फोल्ड करवा सकता हूँ जो बहुत होंगे और मैं जब फ्लॉप पे कॉल करता हूँ तो मेरे पास बहुत सारे सिक्सेस और टेन्स है तो बेसिकली वो I missed a couple of questions. I'm going to quickly go back. Yes, I'll start with you, Saswat. You said it is also one of the most important questions. What would you like to suggest to maintain mental health? So, there are a lot of things like see poker can really get to you. Like I'm seeing the first experiences. There are days where you get deep runs and फिर कुछ नहीं होता है. You come whatever spot in some tournament and you don't make the money you wanted to make. कभी कभी you come fourth fifth you will chip leading on the final table और आप सेवन निकल जाते हो. आपने शायद कुछ गलती कर दी तो obviously it affects you. It's normal, right? आप पोकर खेल रहे हो आपने कुछ गलतियां की आपने चिप्स आप चिप्स हारे. कभी कभी होता है आपने कुछ गलतियां नहीं की और आप अनलकी हो गए और आप टूर्नामेंट हार गए, राइट? And फिर आप क्या like what do you do? So it does affect you. It gets to you. You feel low or you feel helpless. You're like I feel like I'm playing correctly, and I got it in my kings. I ran into aces. This happened, that happens. A lot of that is going to happen in poker. So you have to train yourself firstly to realize कि ये होने ही वाला है. So you want to get used to it. You want to get used to making mistakes and realizing कि be positive कि मैंने अगर मिस्टेक किया है तो मैं उससे like सीखना चाहता हूँ. Okay, yeah, I can play this in a different way. Yeah, that's the kind of approach I think works best. And then in the long run, you've trained yourself to realize कि it's fine. बहुत गलतियां होती है. I might have made a mistake. Unlucky भी होते हैं. Variance तो है ही, right? Even when you run ace king to queens, it's a flip, right? 50-50, you can't do anything. So variance is there. So the best thing would be to acknowledge, like mentally, that variance is there in poker. You are going to lose money, and you need to be positive and you need to be at it. So that is the best way I would, talk about poker with mindset and like maintain mental health. You can't let it come down to like take you down. You can't be like, sometimes you want to make some good play. आपको लगेगा मैं ट्रिपल बैरल ब्लफ कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ and it's not worked out. Did I make a bad play? मैंने punt कर दिया. But you know what? Maybe it was a good play and maybe it just didn't work that time. So don't be like too hard on yourself and like let it affect you very bad mentally because मैं एक चीज जो जानता हूँ अगर आपने किसी चीज से like स्पेशली पोकर रिलेटेड आप मेंटली अफेक्ट हो गए तो फिर इट्स गोइंग टू मेक यू मेक मोर मिस्टेक्स. आप और मिस्टेक्स करोगे. आप tilt पे जाओगे and you don't want to go on tilt, right? You don't want to go on tilt because on tilt you're going to make mistakes. द डेंटिस्ट कुमार सिंह मेरे साथ भी स्टार्ट में ऐसा ही हुआ. तब से ना मैं 10K के ऊपर अकाउंट में रखता ही नहीं हूँ. कैश करना शुरू. या कुमार अगर आपको लाइक यू फील आपके पास वो टिल्ट होने का वो टेंडेंसी है and ये सब नॉर्मल चीजें होती है, राइट? ये ह्यूमन हम लोग गलतियां करते हैं. तो अगर आपको लगता है कि आप में वो सब प्रॉब्लम हो सकते हैं. गाइस एक सेकंड मेरा शायद फोन का बैटरी. समय भाई का डिस्कनेक्शन हो गया है मेरे को लग रहा है.
बैटरी की वजह से। तो अपन थोड़ा टेक ओवर करते हैं गाइस। यार ये स्क्विन डाला है, इस जैक से फट गया यार। क्या करें यार, जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा ऐसे ही। टॉप टू पे बस्ट। क्या हुआ? आपका आवाज नहीं आ रहा समय भाई, आवाज नहीं आ रही आपकी। हर्ष कुछ तो बोलो, इतना शांत शांत। अरे भाई अपन तो क्या जरूरत है बोलने की, आसान है भाई, है ना स्ट्रीम पे। हार्ड लक कमल, हार्ड लक। Harsh, can you hear me? यप यप, ऑल गुड। Sorry, I बैक। lost my sound and video. कोई दिक्कत Anyway, नहीं। I'm back. Kumar, yeah, so I was just saying tendency अगर tilt के है तो then just it's good. आप वो आपके लिए जो what is working, let that work. Don't. I'm sorry, I thought you were asking IDs. How did you start? Jennifer, which is asking, how did you start your poker journey? I mean, where do you get the money to play? Oh, Jennifer, when I started, honestly, like, I did not have money to play. When I was like 16, 17, I was playing online on Facebook for like fake chips. But yeah, when I started off my journey in poker, like in the younger days, it was more of a like I didn't have a bankroll then. If I let's say hypothetically had 3-5 thousand rupees, I played a 1,000 rupees buy-in and a cash game, and then I maybe won and then got a few thousand, and then उसके साथ start playing. I started building a bankroll. Once I made that 5,000 or 10,000, my target was to maybe try to reach 20,000, 25,000, and ऐसे करके मैंने poker bankroll बनाया. Did you ever bust your bankroll? Yes, I have busted my bankroll multiple times back in the day. Now, not since a very long time. Right now, in the last few years, because I've been doing a lot of things and I'm, pursuing an acting career as well as a poker career, I have a very stable way of bankroll management set for myself when it comes to poker. So I'm very comfortable in that space. But yeah, when I was 19, 20, 21, I made a lot of mistakes. I lost a lot of money tilting, making mistakes, bad bankroll management, playing binds that are above my bankroll limit, playing the higher stakes. I've played stakes when I was 19, 20 years old that I don't even play today. Like I played $1,050 Thursday thrill on PokerStars.com when I was 19 years old, 18 years old. $1,000 tournament is like 80,000 rupees buy-in. वो तो मैं शायद आज भी नहीं खेलता हूँ बट मैं 18 19 में समटाइम्स योर रिस्क एपेटाइट इज मोर. तो आप शायद सोचते हो कि हर एक टूर्नामेंट जो आप खेलोगे आप जीतोगे. हर एक टूर्नामेंट खेलना भी है. फोमो भी उसका ज्यादा होता था वो फीलिंग. So yeah, I have busted my bankroll and but all those lessons have taught me, and today I'm following bankroll management quite well. Prem is saying lots to learn what common poker player makes mistakes. Yeah, definitely. Prem ji, what you're saying is absolutely correct. बहुत सारे mistakes like आज के मेरे जो स्ट्रीम में मैंने जितना कुछ भी टेक्निकली बोला है मैंने खुद ही इतने मिस्टेक्स किए होंगे. अगर कोई रेगुलर मतलब आप कोई प्रॉपर प्रोफेशनल कोच को ले आओ जो सिर्फ हैंड एनालाइज कर रहा है वो ना शायद इतने सारे और मिस्टेक्स दिखा पाएगा. एंड देयर इज जस्ट टू मच टू लर्न. यार पोकर इज नेवर एंडिंग. टूर्नामेंट जीता तो अगले दिन एटीएम के लाइन में मिलूंगा. Cash to make good luck, Harsh. Yeah, streamer, somebody wishing यप Harsh good luck. उमेश भाई, थैंक यू भाई। आज गुड लक तो नहीं है बिल्कुल, तो मैंने थोड़ा Bank. स्टेप डाउन कर लिया है भाई। अब आराम से चिल मारेंगे स्ट्रीम पे, कुछ नहीं। ठीक है. स्ट्राइकर लगा लिया है मैंने। Three. Oh, see, that's good, guys. So this is what you'll have to like. It's very important, right? Um, you see what Harsh is doing. Like he's doing the correct thing right here. Like when I lost the crown 1B, I didn't take an instant rebuy because I feel like मैं कोई और leg में I have a better spot for my money, and I made that decision.
I cannot think of FOMO and this and that. If I've lost, I've lost. अभी now मैं Tuesday Prime खेल रहा हूँ. यहाँ पे मेरे को लगता है मेरे लिए अभी value है. So I will play it. After a point, late registration over, or if I feel like value नहीं है, I'll stop it. If it affects like the buy-in is expensive, I'll stop it. Bankroll को brief में can you please explain? क्योंकि 100 buy-in तो कभी कभी बहुत मुश्किल लगते हैं करना. प्रेम जी 100 बाइन तो मतलब मिनिमम चाहिए ही है टूर्नामेंट के लिए. अगर आपको प्रोफेशनली या सेमी प्रोफेशनली खेलना हो, देखो मजे के लिए खेल रहे हो आप, आपका कोई जॉब है, यू नो, आप आपका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है मैं नहीं जानता, बट अगर आप मतलब को जो आप जो भी स्टेक खेलना अफोर्ड कर सकते हो और आपको लगे कि उस वो आप पैसे हार गए तो आप उससे कुछ होगा नहीं आपको, तो फिर आप फिर बाइन वाइन की वो बात करने की जरूरत ही नहीं है. राइट. मैं तो वही थोड़ा सेमी प्रोफेशनल प्रोफेशनल लेवल पे बात कर रहा हूँ, जहाँ पे अगर आप पोकर एज अ बिजनेस प्ले कर रहे हो, तो तब आपको बैंक रोल 100 बायन से थोड़ा ज्यादा रखना पड़ेगा. पोकर शोकर तो चलता रहेगा. थोड़ा ब्रह्मास्त्र के बारे में तो बता दो गोपाल जी. बताता हूँ मैं. तो फिल्म पे मैंने assist किया ब्रह्मास्त्र. इट्स अ वेरी बिग फिल्म, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन. सो मैं उस पर असिस्ट कर रहा था, विच वॉज लाइक अ प्रॉपर मजदूरी का काम. ठीक है. यहाँ से वहाँ भागना, सेट्स पे काम करना, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट ये वो रेफरेंसिंग का काम. एंड फिल्म बहुत वीएफएक्स हेवी फिल्म है. उसमें इफेक्ट्स बहुत हैं. जैसे अगर आपने बाहुबली देखी हो या बाहुबली 2 एजीएफ, उनमें जो इफेक्ट्स वीएफएक्स है, ये बहुत वीएफएक्स हैवी फिल्म है. तो आप जैसे कह सकते हो कि लाइक अ मार्वल फिल्म ऑफ इंडिया. And obviously, I've seen the film. The film is looking very good. The actors are looking very good. The music is absolutely amazing. Preetham Chakravarti, who's a very fine music director, he's composed some amazing music. So the film is an absolutely big treat for our country. And a lot of hard work. Like, a lot of people have gone for a lot of years. 4-5 साल लगे ये फिल्म बनने में. So I think it's looking very good, and let's hope it does very well. I hope that Gopal ji, that answers your question without with me following my confidential norms, जहाँ पे मैं कुछ फिल्म के बारे में रिवील भी नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा I can give you information. In fact, ट्रेलर कल रिलीज हो रहा है guys. तो ट्रेलर कल रिलीज हो रहा है फिल्म का. I will put it on my social media, and if you all get it on YouTube, लेकिन कल ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर जरूर देखना. Kamal is here. Kamal Punjabi. Hello, what's up? Hi, Kamal. I hope you're still on the stream. I hope you're grinding, playing poker, and I hope you make a big stack. Kamal, like, I just ended the stream, lost 100 big blind, fought in prime, kicking your faces. Kamal, just standard things, यार. You can't do anything. Poker है. इतना deep tournament है, इतना बड़ा up top है, बहुत variance है यार. Maybe Harsh bhai is capturing all our question answers. Maybe Harsh bhai is capturing all our question answers. Okay, Abhishek Gautam says, आज हर्ष भाई सिर्फ सुन रहे हैं. What is the meaning of red mark? Red mark, Devrat, is basically my tag on a person who is not a regular, मतलब who is not a जो मतलब रेग. जब मैं बोलूँ तो रेग इज अ पर्सन जो मैं ग्रीन मार्क करता हूँ. आई थिंक लाइक on one of my tables I marked Lucky Bhai as green, who is Lakshpal Singh, who's a very very good player. Now I know him personally, and I know how solid he is as a poker player. So I just know that. Sorry guys, I'm smiling a lot. I think one of my friends has posted this comment, which is related to something I did last night, and it's just making me smile a lot. I'm going to get to that. But Devaji is basically marking red is that वो मतलब सुपर प्रोफेशनल नहीं है. ठीक है. मेरा थोड़ा इधर ऑन ऑफ हो सकता है, लेकिन मेरे को लगता है जो प्लेयर्स रेड मारते हैं ना, वो गलतियां ज्यादा कर रहे हैं, तो उसकी वजह से शायद मैं चिप ज्यादा जीत सकता हूँ. My friend is saying, Samay, what are your views on making turkeys in bowling? This is very funny because कल रात को guys मैं bowling गया था. I don't know how much of you all have done bowling in your lives. ठीक है. But bowling is basically वो pin bowling जिसमें वो बड़ा मोटा ball लेना पड़ता है, and you strike the pins. So I'm not very good at bowling. ठीक है. मैं बहुत average हूँ. लेकिन कल पता नहीं like मैं कोई फॉर्म में आ गया and मैंने 2 strikes रो में मारे. ठीक है. एंड अगर आप 3 स्ट्राइक मीन्स आप 10 पिन को लाइक एक बारी में निकाल दो. तो मैंने 2 स्ट्राइक्स मारे. एंड जब आप थर्ड स्ट्राइक मारने वाले होते हो, तो इट्स टर्की अपेरेंटली.
तो मैं टर्की ड्रॉ पे था एंड मैंने 3 स्ट्राइक्स मार दिए, तो आई गॉट अ टर्की इन द स्क्वाड एंड दैट्स व्हाई माय फ्रेंड इज आस्किंग मी व्हाट आर योर व्यूज ऑन मेकिंग अ टर्की. So my view answering your question is that I think is absolutely fantastic. Anyone who hits a turkey in bowling is an absolute beast. प्रेम जी is giving his ID. प्रेम जी आप तो पहले से डिसाइड कर रहे हो कि हम आपको गिव का टिकट दे रहे हैं. वाह. और यार हर्ष ने पूछा. नहीं नहीं, मैंने नहीं पूछा. नहीं हर्ष ने नहीं पूछा. ठीक है प्रेम जी, आई लाइक दैट पॉजिटिविटी. आई थिंक लाइक आपको टिकट उसी की वजह से मिलना चाहिए कि आप इतने कॉन्फिडेंट हो. आपने पहले से अपना आईडी डाल दिया कि भाई ये है मेरा आईडी, गिव अवे का दे दो टिकट चुपचाप. भेज देना. ठीक है. मेरे को एक कॉन्फिडेंस अच्छा लगा यार. Saswat asking one interesting question. What I confronted like during interesting hand and competitive pod, all of a sudden internet got fluctuated. Did you confront such mishap ever? अरे भाई ये मेरे साथ भी हुआ है. मैं तो I have been using Vodafone for the last 12 years. ठीक है. I have family pack, ये वो 12 साल से Vodafone यूज कर रहा हूँ. मैं कोई पोकर टूर्नामेंट खेल रहा था, पता नहीं कैसे मेरा इंटरनेट इतनी बुरी तरह से गया है. It got so bad. I have left Vodafone and I switched to Airtel because I lost like some big pot in some big tournament. So yeah, these mishaps happen यार. कभी-कभी you're playing poker on your phone, network नहीं है, you're traveling somewhere, कुछ भी हो जाता है, right? So ये इंटरनेट का तो मतलब भाई इंडिया में बहुत ही वैलिड वो है. You have to consider. Gopal, VFX by Red Chillies, no. So VFX is being done in London for Brahmastra, and Prime Focus is the primary company that has done it. What do you suggest? Anjan अंजन. Ghosh last. अंजन घोष. What do you suggest? What do you suggest to increase bankroll quickly? Bhai, there is no trick to increase bankroll quickly. Okay, you can increase your bankroll overnight also, and it can take a month also. Sometimes you just don't know आप कौन सा tournament जीत. अगर ट्यूजडे प्राइम में जिसका बाय 3300 है, गिविंग यू अ वेरी वाइल्ड एग्जांपल, मैं फर्स्ट आ गया, ठीक है, हाइपोथेटिकली, तो मेरा बैंक रोल 6 लाख से ऊपर जाएगा. मैं 3 बुलेट लेके हार गया तो बैंक रोल 10,000 से नीचे जाएगा. अभी मैं इस प्रिडिक्ट या ये करके चलूंगा, मतलब भाई मैं फंस जाऊंगा. सो मैं सजेस्ट करूंगा अगर ऐसे क्विकली तो नहीं होगा, लेकिन इफ यू थिंक आप अच्छा पोकर खेल रहे हो और आप उतना वॉल्यूम डालोगे तो फिर आपके रिजल्ट आएंगे और उतना फटफट बढ़ेगा. कोई भी प्रोफेशन जैसा, कोई भी बिजनेस अच्छा हो, चल रहा हो, तो फिर वो जल्दी ग्रो होगा. और अगर आप मतलब उतना कंसिस्टेंटली नहीं खेल रहे हो, अगर आपको लग रहा है मिस्टेक्स भी बहुत बना रहे हो, अगर आप टिल्ट पे जा रहे हो और कैश गेम पे मनी स्प्यू कर रहे हो, तो फिर भाई प्रॉब्लम है ना, फिर बैंक रोल अफेक्ट होगा. So, जीन जॉन सेन आए हैं. वो मेरा हैंड देखे थे शायद. एस जैक वर्सेस एस क्वीन वाला, उसमें मैंने एस जैक का जैम कॉल किया था एस क्वीन से. तो उसके दो जैक, एक फ्लॉप पे जैक लग गया, टर्न पे जैक लग गया. तो वो न्यू है शायद पोकर पे. तो उनका क्वेश्चन मेरे को बहुत सही लग रहा है. बोलते हैं हर्ष भाई, एस क्वीन अनसूटेड था, एस जैक सूटेड था, सो एस क्वीन इज लूजिंग. बताओ भाई समय भाई, इसका आंसर दो. क्या क्या एग्जैक्टली मेरे को बता. अरे मेरा हैंड पोजीशन हुआ था वोजीशन तो ना. बता. मेरे, पोजीशन बता. पोजीशन हैंड हो सुना मैंने, पोजीशन तो बता. अरे मतलब मैं था बटन पे, और हाँ. यूटीजी ओपन था, और एमपी जैम किया था 20 बिग ब्लाइंड. मेरे पास 20 ही बिग ब्लाइंड, मतलब स्टार्टिंग स्ट्राइक बेसिकली, हाँ. वैल्यू माइंड में. एक सेकंड, मेरे को कोई पूछ रहा है. गट शॉट यूट्यूब पे है है ना, उनका है है गट शॉट है यूट्यूब पे. है लाइव है. हाँ. सब जगह लाइव है गट शॉट. स्पार्टन यूट्यूब, स्पार्टन एफबी, और मेरा चैनल. वेट. हाँ. सो मिड पोजीशन 20 बिग्स उसने खोला, ओपन किया, तूने एस क्वीन रख किया. नहीं नहीं नहीं, ओपन जैम मतलब यूटीजी ओपन किया 2 बिग ब्लाइंड, एमपी ने हाँ. 20 बिग ब्लाइंड जैम किया, मैंने बटन से कॉल किया बेसिकली. उतना ही था मतलब एस रेशियो. क्वीन. हाँ ये स्पिन. हम्म. मैं डिपेंड ऑन द प्लेयर इंफॉर्मेशन. उसके बाद एस किंग था, राइट. नहीं नहीं, एस एस जैक सूटेड. हाँ. तो जिसने रिप किया, लाइक अगर उसका मतलब रेंज तो थोड़ा हाँ बहुत वाइड. अंडरस्टैंड कर पाए तो देन
it's fine to call. But if you think he's not jamming light, you can fold also. Like, I don't want to sound like the guy who's always getting on the tighter side because you lost, because you did make a good call. So ऐसा नहीं कि ace queen is a snap fold. Ace queen is a call a lot. ठीक है? But the नहीं, उसमें dynamic मैंने क्यों changes a किया कि lot. मतलब 20 बिग ब्लाइंड थे ना अपन डीप, तो हाँ आई वाज लाइक कि वो दो बिग ब्लाइंड पे, दो बिग ब्लाइंड के ओपन पे सीधा जैम क्यों कर रहा है 20 बिग ब्लाइंड, सो मतलब वो थोड़ा वीक लगता है ना, तो वो हाँ, फिर नहीं समझ वी गया। वाइट तो थोड़ा हो ही सकता है, तो सही बोल रहा है। उसके सी एस किंग के साथ भी वो सेम कर रहा है। ठीक है, बहुत कम प्लेयर एस किंग को वहाँ पे 3 बैट करते थ्री हैं बैट कर 6 रहे बिग ब्लाइंड्स पे। हैं बट और कोई तो हैंड्स वो भी नहीं ना, बाकी उसके हैंड्स बाद तो। अगर एस किंग भी होता तो वो करता है राइट। ठीक है, एंड एस जैक ऑफ और एस क्वीन ऑफ के साथ भी वो करता, तो यू आर राइट। मतलब ऐसा नहीं है कि एस हम्म, क्वीन नॉट अ कॉल है। ठीक है, इट्स फाइन ओनली, आई एम नॉट गेटिंग रिजल्ट ओरिएंटेड क्योंकि तू हार गया या जैक खुला है जो भी हुआ। बट बट या लाइक थोड़ा अरे ये स्टेज ऑफ द बट टूर्नामेंट। उनका क्वेश्चन हाँ, तो देखो आप। क्वेश्चन क्या था? जॉनसन बोल रहे हैं, हर्ष भाई एस क्वीन अनसूटेड था और एस जैक सूटेड था, सो एस क्वीन इज लूजिंग। अरे उनको बोलो ना खुला। तो वो कितना अरे क्यूट क्वेश्चन चलो है भाई। ठीक ठीक है यार, उन्होंने क्वेश्चन पूछा, उनको नहीं पता होगा हर्ष, तो तो वही मैं बोल जवाब रहा दे हूँ दो यार। कि न्यू न्यू लोग आ रहे हैं आज स्ट्रीम पे, हाँ, जो मतलब नहीं दैट्स वेरी थ्रेड्स गुड, नहीं है। दैट्स गुड। या जॉन एग्जैक्टली। ओनाइन, जॉन ओनाइन यू सेड राइट? हाँ, जॉन, जॉन सेन, John, जॉन John, सेन। please, whatever questions you have, please ask us. We are very happy to, address everything. एकदम Basically, बेसिक से बेसिक situation भी क्या कोई था? क्वेश्चन है ना, तो हाँ भी पूछो। हाँ, जो भी क्वेश्चन है पूछो, क्योंकि एस जैक सूटेड था, एस क्वीन ऑफ था हर्ष के पास। हर्ष प्री फ्लॉप जो है, जो जो 3 कार्ड आते हैं, 3 कार्ड आने के पहले हर्ष आगे था, लाइक जीत रहा था। लेकिन क्योंकि जैक खुल गया, हर्ष उसका जैक पैर लग गया, हम्म, तो इस उसकी वजह से हर्ष उसके हार वजह से गया मैं वहां हार पे। गया। वो सूटेड और ऑफ सूट होने की वजह से कुछ वो नहीं, हाँ, सूटेड रिलेशन। और ऑफशूट सिर्फ तभी मैटर करता है जब वो सेम कलर्स खुलते हैं। तो लाइक जैसे उसके पास हार्ट्स थे, तो अगर हार्ट्स खुलेंगे तो उसका फ्लश लग जाएगा, तभी फिर वो हार था यप। हर्ष। लेकिन उसका जैक खुल गया तो उसका जैक पैर लग गया, जिसकी वजह से जीत गया। उमेश says I shipped IOPC 90 for 87K. Congratulations, Umesh. Uh, that's a huge, you know, um, हाँ, coming first. Big value. अरे Congratulations. उमेश भाई And you are going to get the कॉन्ग्रेचुलेशंस। IOPC tag on your Spartan account, which is an accomplishment. Sure, you can see I have a IOPC winner tag here. I have a millionaire. I think I have won in total, I think 4 or 5 IOPC tournaments in my on my poker thing. अरे उमेश भाई ने तो गर्दा ही उठा दिया भाई। Umesh, hi. And then मोहित सिंह, तो मतलब आपकी भाभी को मूवी दिखा सकते हैं, मीन्स द मूवी इज वर्थ इट। अरे जी जी प्लीज, आप भाभी जी को ले जाना मूवी के लिए। The master is going to be very nice. Wow, Kumar ji, 776 is limped here, and I have just hit top. I'm so sure, but I'm going to get paid off because he's going to bet like half pot here. To bet 67% pot, amazing. Um, Again, I don't want to have a 7 of spades. I don't want to, like, if he hits it, he hits it. We just try to trap him. Now we hit a full house. Should we spaz come out as one big? No. I just let him bluff. I think he'll rip it on the turn. He'll rip it on the turn. Oh my god. If I rip, then what is he calling me? Shit, man. मेरे को लग रहा है मैं रिपीट करता हूँ. He might just hero call it. Looks polarized. Spade miss. सोच रहे हैं वो कुछ तो वो है मतलब. नहीं यार, मुझे लग रहा है पूरी तरह से ब्लफ ही कर रहे थे. पता नहीं. Should have checked river. नहीं, हमें को लग रहा है चेक ही कर देते. फ्लॉप पे इतना बड़ा बैठ करके टर्न चेक कर दिया तो गिव अप ही कर दिया. फाइन. What? Arunji is asking, what is the scene of live poker in India and how often do they happen? So, when it comes to live poker in India, in Goa, there's a casino. There are a lot of casinos. Deltin, Royal, Casino Pride. I think Pride is shut down. A lot of casinos. So, वो casinos में तो live poker चलता ही है. लेकिन उसके अलावा like live poker is not only in Goa.
It's only in Goa. Okay. Oh, what names? Um. So yeah, Arunji, it's only in Goa, and recently the IPC happened in Nepal. So it was at Jhapa, which is like Mana from the border of Siliguri, which is in West Bengal. So I had gone for that. Harsh नहीं आ पाया था. Harsh के हाँ exams थे. एग्जाम से So भाई. I was looking forward to meeting Harsh there, but कोई नहीं. अगली बार I think September में नेक्स्ट हो टाइम रहा है पक्का. IPC again. So यस live सर. poker does happen. It happened. In Goa, it happens quite often every couple of months. Premji saying just playing 15 lakhs guaranteed on Bazi. I was chip reader for the first 2 hours and then came back to 3 BB and now 90th rank. I try to avoid so much swing during the play, but mostly ऊपर नीचे हो जाता है. हाँ प्रेम जी स्टार्टिंग में मैं समझ सकता हूँ. हाँ आप 2 घंटे के लिए चिप लीड कर रहे थे, लेकिन ये सब होने ही वाला है. लाइक स्विंग्स तो आते जाते रहते हैं. लाइक समटाइम्स वो है ही बिकॉज आप फ्लिप्स हारोगे, 50-50 हारोगे, कभी बड़े पॉइंट जीतोगे, कभी सबसे जरूरी है कि यू इन द टूर्नामेंट एंड यू आर कंसिस्टेंटली देयर टिल पर उसका ये चक्कर नहीं हो जाए कि आप टूर्नामेंट के रहने के चक्कर में चिप्स ही हार रहे हो. चिप्स जीतना बहुत जरूरी है. लाइक व्हेन वी हैव बिग चिप्स एंड प्ले अगेंस्ट स्मॉल चिप्स एंड व्हेन वी हिट टॉप पैड ऑपोनेंट हिट्स द chips, तो वैल्यू काफी चला जाता है. वो बात नहीं है. आपको स्मॉलर स्टैक्स के अगेंस्ट अकॉर्डिंगली खेलना होगा. मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हो, लेकिन एग्जैक्टली वैसा नहीं होता है. वो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा. Congratulations, Umesh. I was on your table tonight. I was you winning. You were in silver tonight. So, Umesh, I think your star tonight shipped the IOPC 90, and Yup. people are congratulating you, and people have been on your table and they've seen you play some good poker. एंड उमेश भाई मतलब जब मैं एकदम स्ट्रीम स्टार्ट किया था ना स्ट्रीमिंग करना, हाँ तब से मतलब मेरे को याद है कि मेरे जो स्टार्टिंग के जो व्यूअर्स होते हैं ना, 5-10 हाँ व्यूअर्स हाँ आते हैं, उनमें से एक थे कैश विद उमेश करके आते थे. हाँ कैश विद उमेश करके इनका आईडी था यूट्यूब पे. और आज उन्होंने हाँ. शिप किया है भाई, मज़ा आ गया. स्वाद एकदम. Okay, guys. So it's actually 11:15, and we are actually about going to end the stream in about 15 minutes at the next break. So श्योर. because a lot of y'all are still here, I would want to definitely get in some names for the giveaway. So Harsh, how do you do it? Should I speak and ask them their user IDs हाँ on हाँ. chat? हाँ हाँ, यूज़र आईडीज Is, मांग लो सीधा बस. is वो लोग that चैट्स में okay? स्पैम कर देंगे. हाँ. स्पैम कर देंगे. हाँ, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़. Okay, so guys, whoever's on the chat right now, just please put your user IDs. Whoever's reading the chat right now, please put your user IDs. हम्म. I don't want to select like that and make someone feel like I'm not selecting them. I've been watching the entire chat thoroughly from the start. So just please put your user IDs on the chat, and I'm going to be sending a list from my thing that I've been making to Harsh, and he will make sure that you'll get a ticket to tomorrow's 4:30 p.m. tournament, right? Yep. 4:30 p.m. Tournament tomorrow. So 15 15 यूजर नेम्स, I'm going to 15 answer people a होंगे. few more questions in the next 10 minutes because 10 minutes के बाद we are going to be ending the stream. I'm going to be two tabling this. And congratulations, Umesh. I was on your table tonight. So while taking notes, how do you take precise notes? Oh, so basically, you should write down something जिसकी वजह से आपको like reference याद आएगा. Like if you feel like he's betting too much or या एक particular hand हुआ, उससे आप short में लिख दो, राइट. उन्होंने ये पोजीशन पे ऐसा खेला, ये किया, ये वो. सो देन योर माइंड विल बी देयर. सो कीप योर लिटिल बिट ऑफ नोट्स आल्सो वेरी प्रिसाइज, सो यू नो जब आप लाइक इसके बारे में सोच रहे हो वो बहुत स्ट्रिक्ट है. प्रेम से इसके नो कॉल नहीं ब्रो, बट इक्विटी 20% लूज भी है तो चिल. हाँ सॉरी 30%. हाँ प्रेम जी, यू आर राइट. उसका कॉल था एंड वो तो कोई बात वो नहीं भाई, इक्विटी वो था. तो मस्ती कर रहा था मैं. अरुण जी से, yeah, I saw Siddhant on stream. Yeah. So आई होप Siddhant कि is वो my आईडीज 3 childhood मिनट friend. We बाद were आएगी. हाँ, best friends क्योंकि in 3 मिनट का डीले है ना स्ट्रीम पे. school. हाँ नहीं नहीं मालूम. तो कभी भी आनी चालू हो जाएगी अचानक से भी. हाँ नहीं नहीं आने दो, आने दो, आईडी तो आने ग्रेट स्ट्रीम यार समय भाई. वी शुड डू दिस मोर ऑफन इफ दो. यू आर No, अप फॉर definitely. We'll figure out something. We'll plan something, इट. and श्योर. I think if because IOPC is running, and
maybe one day, like even before it ends, क्योंकि अभी IOPC hype है, and I do think streamers should be playing, should watch, especially an IOPC stream, because like I'm not saying because I'm streaming this, but because IOPC is so big, and people should play it and watch it if they like poker. True. One of the greatest series is now of India. Yeah, Biggest. definitely, and Indian Online biggest. Poker Championship. Yep. नमस्ते नमस्ते ऋषिकेश भाई नमस्ते की हाल चाल It was really fun. Thank you guys. It's all because of you. कोई भी स्ट्रीम सक्सेस होती है तो भाई चैट की वजह से ही तो होती है. And here come Yeah, the IDs on you समय भाई मेरे को कोई कुछ नहीं बोलेगा अभी कल कि मेरे को नहीं मिला मेरे को नहीं मिला. आपको नहीं नहीं, आप पे जो है IDs डाल दो guys, and yes, I can see all the IDs coming in. या मस्त ब्लफ कैच कर रहा था ये ट्यूसडे स्पॉटलाइट में, सर रिवर पे 4 पैर लग गया. 2 बार से बैल किया, मैंने किंग आई के साथ कॉल किया, बड़ी 4 एंड चेक चेक हो गया. Wow, the sand is crazy in the Tuesday prime. I don't defend. That race for like could hear a lot. Could hear a lot. I might just even call river. What jackets does he have? We're good. We're good. Yeah, we're good. See, we're good, guys. We know when we're good. A6, Yep. 6 pair. Ace 4 and Ace 3. I told you. Good. Value bet हो गया यार मस्त. Chipped up a bit in Tuesday prime. Nice. Okay. Guys, I've got the usernames. I'm going to wait for another 2 minutes. I mean, till the end of the stream, I'm going to let the IDs come along. And I am seeing there is no random picking here, guys. I am genuinely seeing the people who I've been interacting with for the last few hours. I know their names, so I've been replying to messages. And it doesn't matter. It doesn't matter if you ask me 10 questions or one question, or even if you just like, I still know the people who were on the stream and just said small things like "मैं enjoy कर रहा हूँ stream" or those things also matter. Everything matters. And if you don't get it, please, guys, it's nothing like there's no competition or anything. Streams goes होती हैं यार. Please understand that there are limited amount of tickets. So we are all here just to get you guys. I like the question. Ila Kumar says, "You prefer GTO or exploitative more?" This is a very interesting question, and it's a very poker theory question. I personally feel like I like to play on the lines of GTO, but in the recent past, there are a lot of situations where I have seen a lot of good exploitative plays, and मैं कोशिश कर रहा हूँ कि like in my gameplay, in some spots I can also play exploitative. Like I don't want to like be the person who feels like I only want to play GTO or only want to play exploitative. I think मुझे like based on the stage of the tournament, based on based on a lot of dynamics, adjust my strategy. But yeah, if I had to choose one, prefer this, then I would go on the lines of GTO. But I don't think like exploitative एक is like मस्ती कर bad. रहा हूँ समय भाई स्ट्रीम एंड होते हाँ, होते एक मस्ती कर रहा हूँ 7 डू सॉफ्ट जैक करो कर रहा हूँ okay, करो. Do guys get inspired by any shenanigans that Harsh is doing here? ठीक है? It is not been approved by me whatsoever. ठीक है? He is doing pure masti जस्ट for the फॉर फन stream. यप So enjoy the masti of the डिस्क्लेमर stream. ठीक है? मैं ऐसे नहीं खेलता हूँ, और मैं आप लोगों के लिए स्ट्रीम को एंटरटेनिंग करने के लिए भी ये नहीं करूंगा. ठीक है? 7 पे जैम बस्ट हो गया तो बढ़िया बस्ट हो गया. See, oh guys, my A6 hand is coming. Watch it because I bet on the turn heavy for value and we got called. You can see with AJ. See, so these spots where like you can go value with mid pair, and I know कि Jack of Clubs में मैं गुड़ी हूँ, किसी का कुछ नहीं लगा है. मजा आ गया भाई आज स्ट्रीम पे
स्वाद आ गए. Harish, do you want the names also or आईडी just the सिर्फ IDs? आईडी सिर्फ आईडी. मैं तेरा चैट देख लेता हूँ. आईडीज 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 ओके. आर यू थिंकिंग टू स्ट्रीम ऑन रेगुलर बेसिस? यस नो भाई सन भाई. Uh, is that a question for me or you? फॉर यू. मैं तो कर ही रहा हूँ. So as of now, I have not planned any schedule, but I am very keen on coming back with Harsh on some streams because the thing is, like I mentioned this earlier, मेरे को लगता है कि like streaming is a it's a nice, very nice thing, very engaging thing, and it's a very interactive, fun way to to people to get to know so much about people, which I love to do. And but because I don't have a fixed schedule right now, I'm a little स्केप्टिकल. resistant on starting it. But मैं बहुत keen हूँ कि मैं हर्ष के साथ whenever possible आऊँ. ठीक है, give you all poker content. We'll talk about poker. We'll talk about non-poker. But guys, just please make sure to support the stream, like, follow it, subscribe. सब्सक्राइब It करो would यार. mean a lot. And सब्सक्राइब if करो. you guys be a little shameless, मेरे जैसे बेशरम हो अपने दोस्तों को मम्मी के फोन से लेके लाइक करो यार, 1 मिनट लगेगा. ठीक है, but it will help us. So थोड़ा बेशरम बनो. Help us out. Just that little bit is like means a lot. So if you all can, गर्लफ्रेंड के फोन पे यूट्यूब कुछ देख रहे हो, बस खोल के लाइक कर दो यार. बढ़िया भाई. प्रेम भाई नहीं, बस अब अपन थोड़ा टाइम का भी कंस्ट्रेंट्स था अपने को. Yeah, I'm meeting you for the first time, so I don't know a lot of you all. But see, Harsh also has a lot of like you guys watch Harsh's stream quite regularly. Some of you all, so Yep. it's It's all okay. good. It's all good. Let's end it on a high note, guys. 7 डोज ऑफ तो मैंने जैम कर ही दिया है. समय से दूसरी ऑफ जैम कराते हैं. Guys, I hope you all 7 dues of. नहीं नहीं भाई, समय हाई स्टेक्स खेल रहा हूँ. मेरा तो नकली सा टूर्नामेंट था, थोड़ा तो मैंने मस्ती कर दी. प्राइम पे मैं भी नहीं करता. I hope I have not missed any questions. Ila Kumar says, do you have any specific favorite hand? One of the hands I really like is 9-10 suited. I would put it on one of my favorite hands. I know कि obviously ठीक like है भाई. aces is the best hand statistically and kings वो सब तो मतलब भाई मस्त 9-10 hand है. सूटेड नहीं Queen डुबाया भाई jack भी आज. मैं fold कभी करता नहीं हूँ. ठीक है, लेकिन 9-10 suited वो एक बहुत मेरे को beautiful hand लगता है. 9-10 suited बहुत मतलब सुंदर लगता है. मतलब जब देखते हो ना तो हाँ. वो एक spark feel होता है. और You मोहित know, कभी कभी ले भी जब मैं डूबता है एसिस बट. देखता हूँ तो एसिस का वो एक थोड़ा पावरफुल वाइब आता है. Aces like aces, right? But जब you see 9-10 suited in these hands ना, जो high equity realize करते हैं, जो मतलब जो mischievous hands होते हैं, तो क्यूटीज. मजा ही. तो uh, Rushik is saying really enjoy the stream and looking forward to such great collabs. Thanks Rushik, thanks so much for coming on the stream. प्रेम जी, समय can't you continue? प्रेम जी, unfortunately the thing is that मैं अभी ये 2 tables खेल रहा हूँ. मुझे खाना खाना है और मेरा ना सुबह 9:30 बजे थिएटर रिहर्सल है. तो अभी मैं अगर ये टूर्नामेंट से निकल भी जाऊँ ना तो मैं रीबाय नहीं करने वाला हूँ. मैं ट्यूसडे स्पॉटलाइट में काफी शॉर्ट हूँ और ट्यूसडे प्राइम में भी मेरे अभी फिलहाल तो 15 ही बिग ब्लाइंड है. So unless I run it up something, even it's going to be not a very big session for me. But hopefully, करेंगे यार, I'm बड़े going to स्ट्रीम्स भी definitely. करेंगे अपन आगे जाके. ये हाँ तो हरीश, फर्स्ट फर्स्ट कोलैब था. मैं कराऊंगा भी, आपसे और खेलने ही बहुत वाला हूँ. हम शॉर्ट लोग नोटिस पे था बहुत. सो this was a little bit of a short notice. I had some technical difficulties coming right at the last moment. यप. So, अब सब sorry सॉर्टेड about है. that. अब कभी भी कर वरना सकते या हैं अभी बड़ा ये स्ट्रीम. सब sorted है. Uh, Ila, one more question. What do you think to qualify for day two and multiple day tournaments? How much tax is enough? Ila, I think a comfortable stack is between 30 to 40 bigs. That is the stack which is a good stack. उसके ऊपर anything is great. And but ऐसा है कि if you are running short, ऐसे like if you're almost in day
and all, then even 15-20 bigs is not like, because one thing that you have to realize about these day twos is that mostly Spartan poker पे जब आप day two पहुंचते हो तो you're in the money. So here you are not just counting day two as a day two, you are also ITM. seeing ICM. ITM, right. Harsh is right. ICM and ITM. ICM in terms of ITM, you know. So you're very close to coming to the money. So definitely see it in that sense. But you should so just make sure that you're adjusting for ICM and like you're basically in the money. So make sure you're adjusting for that. And I think I've got the IDs I wanted to wait. Let me just confirm. 15 आईडीज हो गई क्या? तो आप चाहिए ना और तो नहीं अभी 15 नहीं हुई है, मैं देख रहा हूँ ऑफ जो हुआ भी है। आपकी हो जाएंगी ना 15 जैसे ही, तो आप ही चाहिए तो ना हाँ कॉपी करके पेस्ट कर देना चैट में तो भी चलेगा। हाँ, मैं ऐसे वो 15 पे नहीं जा रहा हूँ बिकॉज इन केस देयर समवन कमेंटेड लेटर हम्म, एंड यू नो हम्म। जैसे आपको सही लगे भाई, नहीं। आपको पूरी छूट दे रखी है भाई आज। हाँ मेरे को तो क्या करना है, मेरे को तो टेंशन नहीं एंड गाइस इन केस यू ऑल हैव मिस टाइप योर आईडीज देन आई एम वेरी सॉरी। अगर वो टिकट नहीं मिले, वो कोई टेक्निकल है। गिफ्ट नहीं नहीं, नहीं आईडीज ये लोग सब सही टाइप करते हैं भाई। हाँ आईडी अगर सही। सब गलत टाइप करते हैं, आईडी सही टाइप करते हैं। कांस्टेंट 40 की वॉचिंग आई है भाई अपने को आज, मींस अ लॉट। एंड और बढ़ेगी आगे जाके होपफुली। Yeah, guys, and next time we are streaming, please, anyone you think friends who will, like the stream, poker people will obviously like the stream a lot. यप। But if you know somebody who wants to like maybe start learning poker, who just wants to this, and if you feel like during the stream कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं कुछ और यू चीजों के कैन बारे में आस्क मी। बात कर रहा हूँ, कुछ पोकर रिलेटेड पूछना हो ना तो प्लीज पूछ लेना। Like Ila, I think I question, do you have to play rebuy, entry, or freeze out? I play all. I don't have too much of an opinion or difference in all. Basically, my answer to that question would be I like to play any tournament जिसमें I feel I can make good money. तो पैसा बनना चाहिए, चाहे वो री एंट्री और रिवर्स से हो या ये फ्रीज बात आउट से। पैसा बनना चाहिए भाई। पैसा बनना चाहिए, पैसा। Ila has a lot of questions. I'm like, suddenly you come, Ila, रुक asking ही me a नहीं lot रहे। of questions. How do you relate lesson of poker with real life? And who he, she, whoever you are. Very ही nice ही। question because poker is very related to personal life. Like, um, poker is like a self business, right? We are managing a bankroll, running money, making money, handling losses. So I think poker is like it gives you amazing life lessons. When to stop when you're like down, when to keep going, when to not get affected. I think overall mentally everything poker, this is a thing that this is something I think us next time we do stream we should talk a lot more in detail. Like I think when people ask these interesting questions, the scope of discussion improves अलग so ही much मजा आ जाता है ना because फिर। हाँ मतलब लेसन ऑफ पोकर रियल लाइफ तो ऐसा ऐसा वो चीज है जिसके बारे में लाइक ये यू गो ये ऑन यहाँ एंड पे ऑन। अपन ना टीजर छोड़ते हैं ये वाले क्वेश्चन को। मैं इसको कॉपी करके रखता हूँ और अपन इसको ना यहीं से उठाएंगे नेक्स्ट में। बाय। ठीक है, ओके गाइस, आई थिंक वी आर एंडिंग द स्ट्रीम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आई हैड एन एब्सोल्यूट ब्लास्ट। आई एम गोइंग टू बी सेंडिंग द लिस्ट टू हर्ष। मेरे को भेज दो ना, आप स्ट्रीम पे अनाउंस करना पड़ेगा वो। किस पे स्ट्रीम पे अनाउंस करना है? हाँ हाँ, आप कर दो चाहिए तो। ओके और वो लिस्ट मेरे को ही भेजना है ताकि मैं आगे फॉरवर्ड कर दूं, पर स्ट्रीम पे अभी बता दो तो मतलब ऐसा नहीं हो ना कि, समझ रहे हो आप? तो हाँ लाइव हाँ ही हाँ, अपन अनाउंस कर देते हैं पहले। एक सेकंड आई जस्ट ओपन वन सेकंड। लेट मी काउंट 1 2 3 4 5 6। Thank you guys for joining in, and next time we'll have much bigger blast on the stream, and I will also run deep a bit, and let's see क्या होता है next time। ओके हाँ, आज तो बीटी डिफॉर्म। मिली है भाई भर भर के। पर कोई बात नहीं भाई, सच इज लाइफ, सच इज पोकर, दिस इज द स्पोर्ट दैट वी हैव चूजन। सो या 3 4 5 6 7 8 10 11 12
Um, okay, guys, I'm going to just count one quickly. One, two, three, 5, 6, 7, 8, 9. I think, yeah. So these are the names. RK Dollar 93, 007 Gaurav, um, the dentist, Poker Star, Internet Kid, Rushik Patel, John 1111111, Commubit, Nikma, Mohit 0070, Prakash 933, Bittu Rocks, Happy Hunter, अच्छा बच्चा कितने बोल के चले गए समय भाई? अरे समय भाई, लिस्ट भेज दो यार, मैं अनाउंस कर देता हूँ. उनका फोन ही ऑफ हो गया शायद. डिस्कॉर्ड पे मांग सकते हैं क्या अपन? हाँ, आई गॉट इट द लिस्ट. अच्छा बचा तक तो बता ही दिया था उन्होंने, और लास्ट वाला है बाजी प्रभु गाइस. सो आई विल जस्ट कॉपी पेस्ट इट इन द चैट ऑल्सो. और मैं आधा इधर आ गया हूँ, तो वो थोड़ा इसको सही करते हैं. बड़ा हो जाता हूँ मेरे को. सो गाइस, सो गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन यार. समय भाई डिस्कनेक्ट हो गए हैं, एंड अपने विनर्स का नाम बता के गए ही हैं वो. सबका नाम मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ. RK डॉलर 93,007 गौरव, द डेंटिस्ट, पोकर स्टार, इंटरनेट किड, ऋषभ पटेल, जॉन 11111, कॉमोबेट, निकमा, मोहित 0070, प्रकाश 933, बिट्टू रॉक्स, हैप्पी हंटर, अच्छा बच्चा, एंड बाजी प्रभु. So guys, congratulations on winning the giveaway today, and you will be getting the tickets for IOPC जो कल है 4:30 को. सो थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन यार, मीन्स अ लॉट. एंड टिकट नहीं भी मिली तो इट वाज सुपर स्ट्रीम, लॉस टू लर्न फॉर ऑल. थैंक यू हर्ष एंड समय. थैंक यू यार सृजन भाई. इस बंदे को लाया हर्ष आज, इट्स माइंड ब्लोइंग. अरे धन्यवाद धन्यवाद गाइस, आप सबका प्यार बना रहे, अपन और बड़ी बड़ी स्ट्रीम्स करते रहेंगे. एंड यप, दैट इज इट फॉर टुडे स्ट्रीम गाइस. आप आते रहिए चैनल पे, और अपन ऐसा बढ़िया बढ़िया कंटेंट लाते रहेंगे. एंड यप, मीट यू ऑन माय नेक्स्ट स्ट्रीम गाइस. तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम.